that the state government will not pay the works done by with the government running on daily borrowings. Under the important Jal Jeevan measures, 500 crores has not been paid to the contractors. For the works done during the previous TDP government and the OSRCP government did not pay thousands of crores payment due to contractors, including Narega works. All funds have been diverted. It is only after a long legal battle, finally under the orders of the High Court, some payments were made. So the contractors are not Ravindra Kumar ji, please stop your speech. You will continue on Monday. ठीक है ना? Obliged. जो your remaining part of the speech that will you cover please on Monday. Obliged. Thank you. The time is over already. So now it's a private member business. Bill. Private member bills. Honorable members, just your attention please. During the private members legislative business day of the last session on the 3rd December 2021, Professor Manoj Kumar Jha, member, had opposed without giving any prior notice the motion moved by Sri K.J. Alphonse, member, for leave to introduce his private members bill, namely the Constitution Amendment Bill 2021, Amendment of Preamble. He had argued inter alia that preamble is part of the basic structure of the Constitution and the bill may not be allowed for introduction. He had also referred to Rule 62(2) of the Rules of Procedure and contended that such bill which did not have the previous sanction or recommendation of the President cannot be introduced in the House. It was clarified on that day by me that Rule 67 of the Rules of Procedure states that if a motion for leave to introduce a bill is opposed, the chairman, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion may, without further debate, put the question for the decision of the House. It was also informed that a decision on the motion for leave to introduce a bill had to be taken by the House and not by the chair. However, on a request made by the Minister of State for Parliamentary Affairs and after taking the sense of the House, the introduction of the bill was deferred. Preamble is part of the Constitution and as per Article 368 of the Constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution, and a bill for the purpose can be introduced in either house of the Parliament. There are a number of instances in past when private members' Constitution amendment bills to amend the preamble have been introduced in both the houses of Parliament, and they are on records. As already clarified by me, on that day, that is on 3rd December 2021, if the introduction of a bill is opposed on the ground of legislative competence of the Council decides the same and not the Chair. There are a number of rulings given by the Chair in this House on this issue taking the same stand in the past. I would like to quote a couple of them. On 4th September 1959, the then Deputy Chairman Rajya Sabha gave the following ruling, and I quote, Sri Bhupesh Gupta has introduced a bill for amending the Representation of the People's Act 1951. The Law Minister raised a point of order that the bill is ultra-virus of the Constitution as it indirectly seeks to amend the Constitution by introducing a provision for recall under the guise of disqualification under the Representation of the People Act. This objection was not taken at the introduction stage, but I still feel that there is a strong force in the objection raised by the Law Minister and it may amount to an amendment to the Constitution. But the Chair has never taken the responsibility of deciding the ultra-viruses or otherwise of a bill. There have been several decisions of the Chair in this connection. In fact, on 23rd April 1951, when an objection was taken in the Provisional Parliament to the Forward Contracts Regulation Bill that it was ultra-viruses of the Constitution, the Speaker observed. The position which I had made clear was that the question of ultra-viruses will not be decided by the Chair, but that it may be left to the House. If it comes to the conclusion that it is ultra-viruses, the House may reject the bill. If the House accepts the bill for consideration, then the party aggrieved has his remedy in the Supreme Court or other courts.
Therefore, I said it was no use going in detail into questions of constitutional niceties, because after all, these are things which can best be argued by lawyers, and it is not proper to take the time of the House over this long discussion of niceties. Again in 1953, when the constitutionality of the Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill was raised, it has been observed. In all these matters, the Speaker has never taken upon himself the responsibility of deciding the point of order when it is constitutional or otherwise. It is for the House to take this also into consideration in voting down the bill or accepting it. Under the circumstances, I leave it to the House to accept or not to accept the bill, unquote. In another occasion, on the 11th May 1963, the then chairman, Rajya Sabha, gave the following ruling, and I quote, "I thank the honorable members for the assistance they have given me in coming to a conclusion. Prima facie, I think we can go on with the discussion, but I do not wish to give any ruling, because in the central legislature, it has been the accepted practice for the chair not to take upon itself the responsibility of deciding whether the House has the legislative competence to entertain a bill or whether a bill is ultra vires. When any such question is raised, the usual practice has been to leave the matter for the decision of the House. The main reason for the adoption of this course is that a question relating to the legislative competence of the House or the constitutionality of the proposed legislation often involves much difficulty and complexity, and it is the function of the courts and ultimately of the Supreme Court to decide such a question. The presiding officer should not arrogate to himself the functions of the court, especially as he has not facilities or material on which to come to a satisfactory decision. It is the sole privilege and duty of the House to decide every question that arises on a motion moved by a member. So if the matter is left to the House to decide, the House may reject the bill if it is of the view that the bill is ultra vires. If, however, the House accepts the bill, the party aggrieved will still have the remedy in the courts and ultimately in the Supreme Court. This question came before the central legislatures on various occasions, and the accepted practice has been as stated by me, unquote. As regards the objection raised by Professor Manoj Kumar Jha, under Rule 62(2), the bill does not have the previous sanction or recommendation of the President. I may clarify here that there is no such requirement for introduction of the bill under reference. Therefore, there is no question of any doubt on the admissibility of the bill for introduction seeking to amend the preamble to the Constitution. Be that as it may, the bill has been listed in today's agenda for introduction. The House may decide about the manner of disposal of the motion when the motion for introduction of the proposed Constitution Amendment Bill 2021, amendment of preamble, is moved by Sri K.J. Alphonse. Thank you. Sir, I do not think that the House itself also has any mandate or is competent to amend the preamble of the Constitution. Neither the Council of States nor the House of the People. Nor the House of the People. So it's very clear that what is enshrined there, it's not a question of tinkering with the basic structure. There are umpteen judgments of the Supreme Court also on that cannot be. And various governments, if they have come up with any constitutional amendment which has been challenged and questioned, they have been cast aside by the Honorable Supreme Court. Here we are talking of the very preamble of the Constitution. So I would say, rather urge the member concerned also, that in the larger interest of this country, where questions are being raised about the integrity of our commitment to the Indian Constitution and its preamble, this should not be entertained. Thank you. Thank you, Mani Anandji. Please. Yes, please. Point here, sir. So we also know that two changes were brought in the preamble to the Constitution by the 42nd Amendment in this country, sir. Two words, socialist and secular, were inserted into the preamble. So it is not that the preamble cannot be changed. Thank you. Mane Sukhendu Sekhar Raj.
Sir, I support the views expressed by Mr. Anand Sharmaji and Manoj Jhaji. In Keshavananda Bharati case, the Honorable Supreme Court, they decided inter alia that sovereignty of Parliament is there, but the supremacy of the Constitution cannot be ruled out. So, whether it is Parliament or any other constitutional or statutory authority, they have to abide by the Constitution. Since the point raised by Anand Sharmaji and the other speaker who has said about the constitutional amendment, that is altogether a different thing, and it happened long back before the judgment delivered in Keshavananda Bharati case. Absolutely. Therefore, that judgment of Keshavananda Bharati is still subsisting, and I would request the chair not to allow this. Mani Sadasya, please. Sir, the question I think here is that whether we can add a sentence to the preamble or not, but whether the basic structure of the Constitution can be amended or not. The country believes, the Constitution believes that these words is a part of the basic structure that can be challenged. Supreme Court and the Parliament many a times told us that. Now a time has come when somebody is coming here to change the Constitution and the basic structure. That can't be allowed. Yes, Abdul Wahab ji. You are the last speaker now. Because I will close it. Please, no. Please. No, it's not open discussion. This one, amendment of Constitution. Okay, the bill came. Where is the proposer? Thank you. Sitting in the Central Hall? Thank you. माननीय सदस्यगण, चेयर की पोजीशन इसमें क्या है मैंने क्लियर की कई रूलिंग से, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड, कोटेड 4th September 1959 ruling. Number 2, yes, again in 1953 Legislative Assembly Prevention of Disqualification Bill, such matters were settled here by ruling. Again on 11th May 1963 the ruling was very clear. So far as chair's role is concerned, so chair, the house can decide or the court can decide, not the chair. That is. Please take your seat. No, I have not allowed. Let us close this discussion. Mani Anand ji. I am moving. Please. You have already availed your occasion. Please. I have already clarified the position. One sentence. Sir, everyone sitting here, whether it's the government, the ministers, Honorable Chair, and all of us have sworn by this Constitution as members when we are sworn in. Thank you. Can we then change the preamble? Thank you. माननीय सदस्यगण, ये सारे जो हमने रूलिंग्स कोर्ट की, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे प्रोविजंस यहाँ रूलिंग में दिए गए हैं सिंस 1951. So I am not going on detail. Private members legislative business bills for introduction. The Uniform Civil Code in India Bill 2020. Dr. Kirodi Lal Meena. Just wait. Yes, please. Dr. Kirodi Lal Meena, not present. Since he is not present, not moved, I am not going to allow any discussion on this. Yes, you had. Dr. Amar Patnaik, the Constitution Amendment Bill 2020, Amendment of Preamble and Article 51A. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2020. So I, Dr. Amar Patnaik, move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India for insertion of the word ahimsa in the preamble to the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Lokpal and Lokayuks Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Lokpal and Lokayuks Amendment Bill 2021.
So I, Dr. Amar Patnaik, rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Lokpal and the Lok Ayuktas Act 2013. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Ayes always have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. The Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Central Educational Institutions Reservation in Admission Amendment Bill 2021. So I rise to introduce a bill further to amend the Central Educational Institutions Reservation in Admissions Act 2006 to provide for reservation for students from government schools in central educational institutions. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Prevention, Preparedness and Management Bill 2021. Sri Derek O'Brien ji, not absent. The Criminal Laws Amendment Bill 2021, Dr. Prashant Nanda to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code of Criminal Procedure 1973. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Prashant Nanda ji. I introduce the bill. Thank you. The Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021, Sri Subhash Chandra Singh to move for leave to introduce the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021. Sri Subhash Chandra Singh, not present. Sri Subhash Chandra Singh, absent. Sri K.J. Alphonse to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sri K.J. Alphonse, absent. Dr. V. Sivasan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend Constitution of India. Bill 221 amendment of the Preamble. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sivasan. I introduce the bill, sir. Thank you. The Right to Health Bill 2021. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the Right to Health Bill 2021. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I move for leave to introduce a bill to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living of a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, thank you. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2021, Sri Elamaram Karimji to move for leave to introduce the Indian Penal Code Amendment Bill 2021. Thank you, Deputy Chairman. I, Elamaram Karim, to move for leave to introduce a bill further to amend Indian Penal Code 1860. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karim ji. I introduce the bill. Thank you. The Labour Codes Repeal Bill 2021, Sri Elamaram Karim ji to move for leave to introduce the Labour Codes Repeal Bill 2021. Sir, I move to leave to introduce a bill to repeal certain enactment related to Labour's Code. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karim ji. I introduce the bill. The Council of Climate Change Bill 2021, Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Council on Climate Change Bill 2021. Thank you, Chairman, sir. I rise to move for leave a bill to provide for the establishment of the Council at the centre and in each state and union territory for climate change action and the matters connected therewith or incidental thereto. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Epidemic Diseases Amendment Bill 2021, Srimati Priyanka Chaturvedi ji to move for leave to introduce the Epidemic Diseases Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave a bill further to amend the Epidemic Diseases Act to keep in mind the significance of clear and consistent public health emergency law. Thank you, sir. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. I introduce the bill, sir. Thank you. The Darjeeling Sports University Bill 2021, Srimati Santa Chetri to move for leave to introduce the Darjeeling Sports University Bill 2022. Srimati Santa ji from Lok Sabha. Thank you, sir. I, Srimati Santa Chetri, to move for leave to introduce the bill to establish and incorporate the Darjeeling Sports University in the state of West Bengal. Thank you, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Santa Chetri ji. Yes, sir. I introduce the bill. Thank you. The Crop Diversification Corporation of India Bill 2022, Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Crop Diversification Corporation of India Bill 2022. Absent. The Victim Impact Statement Bill 2022, Sri Pratap Singh Bajwa ji to move for leave to introduce the Victim Impact Statement Bill 2022. Not present. Absent. The Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169, Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Article 168 and omission of Article 169. Chairman, sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, Article 168 and the omission of Article 169. Thank you. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Criminal Laws Amendment Bill 2022, Dr. Fawzia Khan to move for leave to introduce the Criminal Laws Amendment Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1973, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fawzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. Thank you.
The Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Dr. Fauzia Khan to move for leave to introduce the Victims of Acid Attacks, Rehabilitation, Support and Healthcare Bill 2022. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to ensure proper rehabilitation and relief to victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fauzia Khan ji. Sir, I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of the 7th Schedule. Sri P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. In the year 1976, the state's power to legislate on education, including technical education, medical education, and universities, was taken away from List 2 by constitutional amendment, and same was kept in List 3. The bill seeks to restore and partition the power over these subjects parallelly between the state and the central, following the true spirit of cooperative federalism. For that purpose, I raise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, namely the 7th Schedule. Thank you, P. Wilson ji. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri P. Wilson ji. Thank you to the House and the Chairman. I introduce the bill. Thank you. Now, bills for consideration and passing. The Companies Amendment Bill 2019. Further consideration of the following motion moved by Dr. Binay P. Sahasrabudhe ji on the 3rd December 2021, that the bill further to amend the Companies Act 2013 be taken into consideration. On 3rd December 2021, the minister concerned had concluded his speech while intervening in the discussion. The mover of the bill may accordingly be called upon to reply the discussion. Dr. Vinay P. Sahasrabudhe ji, please reply. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। सदस्यों को पता ही है, सदन जानता है कि 3 दिसंबर को, जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इस नाम से मैंने जो एक विधेयक यहाँ पर रखा था, एक प्रस्ताव रखा था, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई और विपक्ष से श्रीमान जयराम रमेश जी, फिर डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, श्री विजय साई रेड्डी जी, श्रीमती अमी याज्ञनिक जी, हमारे मित्र श्री मनोज झा जी, फौजिया खान जी, महेश पोदार जी, हर्षवर्धन डूंगरपुर जी और प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने इस विषय पर अपने बिंदु रखे थे। इसमें से श्री जयराम रमेश जी ने और अमी याज्ञनिक जी, मनोज जी, फौजिया खान जी, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और विरोध में कुछ अपने तर्क भी बताए थे। बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया था और इस तरीके से कानून में परिवर्तन होकर जो CSR का 2% होता है, उसमें से उसका 25% ये हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, हमारे यहाँ जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग में लाने के प्रति एक प्रावधान किया जाए, मैंडेटरी किया जाए, कानूनन उसको एक बंधन के रूप में लागू किया जाए। इस प्रस्ताव के प्रति बाकी सदस्यों ने समर्थन भी जुटाया था। कुल मिलाकर इस संदर्भ में हमारी भूमिका, मैंने स्वयं जब प्रस्ताव रखा था तब यही थी कि जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर अभी चल रहा है और सारी चीज़ें केवल सरकार करे, इस धारणा से पूरा समाज भी बाहर आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सबको अपील की है कि सबका प्रयास भी महत्वपूर्ण है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, तो एक दृष्टि से इसका एक प्रतीक रूप था। श्रीमान जयराम रमेश जी ने, अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, मगर मेरे प्रस्ताव का विरोध करते हुए 2 बिंदु मुख्य रूप में कहे थे। एक बिंदु ये था कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष पद के प्रति उनकी कल्पना ये थी कि
जैसे शायद परिनियों में कहीं उल्लेख है कि प्रोफेशनल व्यक्ति कोई विशिष्ट जिसको एकेडमिक बैकग्राउंड हम कहेंगे, ऐसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए। और वो कटाक्ष ये कर रहे थे, यद्यपि ये कहते हुए कि श्री तरुण विजय जो इस सदन के पूर्व में सदस्य थे और अभी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, उनके प्रति सद्भावना रखते हुए भी उन्होंने कहा कि शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति की नियुक्ति होना उपयोगी था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वैसे प्रोफेशनलिज्म की व्याख्या भी काफी व्यापक होती है। आज हम देखते हैं कि आईएएस अधिकारी कल अगर शिक्षा विभाग के सचिव है तो आज एकदम से स्टील विभाग के सचिव बन जाते हैं। ये तो व्यवस्था में है। तो एक जनरलिस्ट अप्रोच भी कई बार रहता है और श्री तरुण विजय जी की जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए उसमें कुछ आपत्तिजनक है ऐसा मुझे नहीं लगता। और फिर जो काम श्री तरुण विजय जी ने विगत 1.5 साल में किया है वो भी मैं मानता हूं कि सदन के सम्मुख लाना उपयोगी रहेगा कि उल्लेखनीय काम है, क्योंकि कुल मिलाकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का एक काम होता है कि हेरिटेज बायलॉज जो होते हैं उसको बनाना, और ये काम बरसों से अटका हुआ था, आगे नहीं गया था। और उन्होंने ये हेरिटेज बायलॉज बनाने का और जो मॉन्यूमेंट्स है उनको कैटेगराइज करने का जो काम होता है, 918 मॉन्यूमेंट्स को विगत लगभग 2 सालों में उन्होंने ये काम किया है। इसका दायरा भी बढ़ाया है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी सामान्यतः जो पुराने खंडहर या पुराने वास्तु, पुरानी हमारी इमारतें, इनके बारे में देखती थी, मगर कई बार हमारे समाज में जो हमारे सिख बंधु है या जू संप्रदाय के लोग हैं, जैन या बुद्धिस्ट है, इनके इतिहास से संबंधित जो विरासत के स्थान है, हेरिटेज के स्थान है, जो मॉन्यूमेंट्स है, इनकी उपेक्षा हुई थी। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि ये उपेक्षा अभी समाप्त हुई है। साथ ही साथ जो राखी गढ़ी का एक्सकवेशन हुआ है और तरह तरह के नए विषय जो सामने लाए जा रहे हैं, उसमें भी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की एक भूमिका रही है, जिसका नेतृत्व श्रीमान तरुण विजय अभी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी नियुक्ति के प्रति आक्षेप का कोई बहुत बड़ा मतलब है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो CSR का फंड है वो लोकल विषयों के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी बात कही थी। और अच्छा है उन्होंने इस विषय को छेड़ा। हम भी यही कहते हैं कि लोकल जरूर लाया जाए, क्योंकि देश में ये जो हमारे धरोहर के स्थल है, विरासत के स्थल है, वो हर जगह है, ऐसा नहीं कि वो विशिष्ट जगह पर है। और मैं उदाहरण देता हूं कि बहुत सारी कंपनियों के कार्यालय, मुख्यालय मुंबई में है, और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में भी इन दिनों किलों की जो दुर्दशा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करने वालों के राज में ही ये उपेक्षा चरम सीमा पर पहुंची है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्यों मैं इस विषय का आग्रह रख रहा हूं। जैसे हम देखते हैं कि मुंबई महानगर में एक माहिम का किला है। माहिम तो बहुत निकट है, और माहिम के किले पर थोड़ा साहस रखिए ना प्लीज, थोड़ा टॉलरेंस। माननीय प्रियंका जी, तो जो ये माहिम का किला है अध्यक्ष महोदय, तो ये माहिम के किले पर बाकायदा एक खाटी खाना चल रहा था और वहां पर जानवरों की कत्ल खुलेआम होती थी। ये तो अच्छी बात है कि इतिहास के कुछ अध्येताओं ने और इन विरासत और हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में चिंता करने वालों ने ये बात महाराष्ट्र सरकार के सामने लाई, तो अभी वो कुछ बंद हुआ है। मगर वहां पर अभी भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से किले का कब्जा लिए हुए हैं, आप एक बार जाकर देखिए महोदया, आप जाकर देखिए। आपका ज्ञान थोड़ा सीमित है, मैं आपके ज्ञान में थोड़ा वर्धन करना चाहता हूं। तो ऐसी सारी स्थिति है, कहीं प्रार्थना स्थल बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, कहीं मजहर बनाई गई है। तो ये सारा योजनाबद्ध तरीके से, रायगढ़ का समाचार बीच में आया था कि कैसे रायगढ़ किले पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का किला है, वहां पर भी इस तरीके का एक गलत काम वहां पर हो रहा है, जिसको रोकने के बारे में प्रयास हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये प्रयास सफल भी हो जाए। और ये बताने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उदारमनस्क थे, ऐसे सारे अवैध जो काम हो रहे हैं उनको प्रश्रय देने की एक बहुत घिनौनी रणनीति आज की महाराष्ट्र की सरकार वहां पर अपना रही है, जिसका जितना निषेध हम करें, जितनी निर्भत्सना हम करें, कम है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मुंबई की जो कंपनियां हैं, इनको अगर इस विषय में काम करने के लिए हम अवसर देते हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे अवैध काम जो वहां पर हो रहे हैं उसके बारे में निश्चित रूप में कुछ न कुछ हम कर पाएंगे। आज महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 60 ऐसे किले हैं
जो केंद्र सरकार के सुरक्षा में है, 47 किले हैं जो राज्य सरकार की सुरक्षा में है, और दुर्भाग्यवश राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण इन किलों के ऊपर ऐसे अवैध कामों की एक के बाद एक लगातार बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिसकी प्रति जितनी गहरी चिंता हम व्यक्त करें, मैं मानता हूं कि कम है। मान्यवर, इस बिल के बारे में बात करते समय इस सदन में उपस्थित बड़ी विद्वान कानून की जानकार श्रीमती अमी याज्ञनिक ने भी कुछ बिंदु रखे थे, और उन्होंने कहा था कि सीएसआर का उपयोग तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो आप क्यों मॉन्यूमेंट की सुरक्षा के लिए सीएसआर के पैसे के बारे में वकालत कर रहे। मैं माननीय सदस्य को यहां पर विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कल्पना है उसमें संस्कृति का विकास भी आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आइडेंटिटी भी आती है। आखिरकार अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो भारतीय कहने के कुछ एक बिंदु है, कुछ मान बिंदु हमारे हैं, और इसमें हमारे इस धरोहर के सारे स्थल आते हैं, हमारी परंपरा से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए ये सारे स्मारक स्थल आते हैं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट से ये विपरीत है, ऐसा मानने की गलती हम न करें, ये मेरा आपको निवेदन है। आदरणीय उपसभापति जी, मुझे ये भी सुझाव दिया गया माननीय सदस्य से कि ये इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है, ये तो छोटा सा विषय है, आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, उनको प्रार्थना करिए और उनको कहिए कि थोड़ा धन आवंटन करिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये तो बात होती है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो बजट है वो सरकार ने बढ़ाया है, मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं, और हम प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से संवाद भी करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री के साथ या नेता के साथ बोल रहे हो और नेता कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पूरी सुनवाई होती है, और पूरी सुनवाई के साथ हमारी बात को गंभीरता से ले जाने की हमारी पद्धति है, इसलिए वो तो बात सही है। और इसमें और भी एक बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इतिहास के बारे में एक दृष्टि अपनानी होती है ना, उसमें नए नए मॉन्यूमेंट भी बनाना जरूरी होता है। कई बार मुझे अचरज होता है उपसभापति महोदय कि हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, मगर जिनके जन्मदिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में या त्योहार के रूप में या किसी आयोजन के माध्यम से मनाए जाते हैं, ऐसे केवल 3 प्रधानमंत्री हैं। माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदर है सबको, उनका जन्म दिवस हम बाल दिन मनाते हैं। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, उसको भी हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस को भी हम मनाते हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन नहीं थे, किसी का जन्मदिन नहीं मनाते हम। अटल जी का जन्मदिन हमने पार्टी में शुरू किया, बाद में सरकार ने लाया। आप पीवी नरसिंह राव को तो भूल जाते हैं। उपसभापति महोदय, बताना चाहता हूं, सीट पर बैठकर आप ना बोलें, आप सब लोग प्लीज। नो, उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि श्री पीवी नरसिंह राव, इस देश के इतिहास में उनका स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ माननीय सरस्वती देवी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। जब उनका निधन हुआ तो उनका अंत्य संस्कार यहाँ करने के बारे में आपत्ति जताई गई, उनके परिवार को वहां तेलंगाना में जाकर उनका अंत्य संस्कार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंत्य संस्कार करते थे तो उनके समाधि बन जाती थी, जो समाधि कुछ चंद लोगों को नहीं चाहिए थी। ये बात है, इतनी संकीर्णता है यहाँ पर, और इसलिए अगर नए मॉन्यूमेंट बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें और आवंटन की जरूरत होगी। हमने यहाँ वॉर मेमोरियल बनाया, आपने तो कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पुलिस मेमोरियल बनाया, आपने तो एक युद्ध का बनाया। अरे केवल एक युद्ध के जवानों के प्रति भावना का अभिव्यक्तिकरण उपयोगी नहीं है। सारे जवान जो भी देश के लिए बलिदान किए हैं, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है। आपका जैसा सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है। हमने, उपसभापति महोदय, नेशनल रिकॉग्निशन का भी हमने डेमोक्रेटाइजेशन किया है। हमने कभी अंतर नहीं किया। हमारे लिए सारे दिवंगत प्रधानमंत्री उतने ही माननीय हैं जितने कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए सभी प्रधानमंत्रियों का वस्तु संग्रहालय बन रहा है, हम सबको पता होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन की बात है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा की बात है, हेरिटेज और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त मॉन्यूमेंट्स है, उनकी सुरक्षा के लिए यह कहना जरूरी होता है।
मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलने की मुद्रा में नहीं हूं, आवश्यकता भी नहीं है, मगर हम सब जानते हैं कि देश की पहचान जो है वो एक अपने आप में देश का एक अस्तित्व रखती है। अगर हमारे देश में, आप में से कई लोग विपक्ष में है, यहां पर है, तेल अवीव गए होंगे इजराइल की राजधानी, या चाइना गए होंगे बीजिंग में, तो बीजिंग जाओ, तेल अवीव जाओ, आपको ध्यान में आता है कि बीजिंग में बीजिंग it is the chairman. It is the chairman's authority. You are not on the chair. So please keep quiet. Please. No, you are not supposed to speak. It's not going on record. Please. जब हम बीजिंग में जाते हैं उपसभापति महोदय, सीट पर बैठकर हमें लगता है कि हम माननीय चेयरमैन ने मांडारिन अमेरिका में गए हैं। आपके लिए किस तरह से बिहेव करना चाहिए अभी बताया। प्लीज राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर में जो बिहेव है उसको फॉलो करिए। प्लीज, यू आर नॉट देयर टू डिसाइड, उसके लिए आप डिसाइड करने को नहीं है यहाँ पर। बैठे आप, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। इनको आपत्ति क्या है जी? अगर ये स्थिति होगी, एक दूसरे को आप डिस्टर्ब करेंगे, नहीं चलेगा। बैठ जाइए। आपत्ति क्यों है आप? बैठ जाइए। तो मान्यवर, मैं ये कह रहा था कि हर शहर की पहचान होती है। आप बीजिंग जाते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि शायद आप मांडारिन अमेरिका में हैं। तेल अवीव जाते हैं तो लगता है कि आप हिब्रू अमेरिका में है। दिल्ली में और मुंबई में ये आपको नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने देश की पहचान, अपने शहरों की पहचान, यहाँ की जो ऐतिहासिक संपदा है उसकी पहचान कायम रखी है, और इसके लिए भी CSR के बारे में ये होना जरूरी है। मान्यवर, भारत की जो सौम्य संपदा है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, उस संदर्भ में इस तरीके का एक प्रबंधन होना, इस तरीके की एक योजना होना कि CSR का पैसा हम इन वास्तुओं की, इन इमारतों की रक्षा में खर्चा किया जाए, ये बहुत जरूरी है। मगर जो इस संदर्भ में चर्चा हुई, उस चर्चा का जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय जी ने जो अपनी भूमिका रखी, और सबसे महत्वपूर्ण कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बढ़ाया हुआ बजट, मणिपुर जैसे हमारे उत्तर पूर्व के राजधानी के मणिपुर शहर के, मणिपुर के इम्फाल के निकट रानीमा गाइडिंग लू के नाम से एक स्टेशन बनाया जाना, और विभिन्न स्टेशंस को भी हमारी विरासत और हमारी धरोहर के अनुरूप नाम देने का एक प्रस्ताव सरकार के द्वारा आगे किया जाना, ये जो बहुत अच्छे, सराहनीय और प्रयास इस सरकार के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हो रहे हैं, वो देखते हुए मेरे प्रस्ताव का जो भाव है वो सरकार ने समझा है। मैं सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना ये प्रस्ताव पीछे लेता हूं। बहुत धन्यवाद। Dr. Vinay P. Sahasrabudhe, are you withdrawing the bill or should I put the motion to vote? Are you withdrawing? Yes, withdrawn already. So the bill has been withdrawn. The Population Regulation Bill 2019, Sri Rakesh Sinha to move a motion for the consideration of the Population Regulation Bill 2019. सभापति महोदय, खड़े होकर कहना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ये अवसर आया है, जिस अवसर की प्रतीक्षा पूरा देश और स्वयं भारत का संसद करता रहा है। इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है। मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया। यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है। सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जो हम सुपरिचित हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है? 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जब जो जनसंख्या 1901 में थी तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तब हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था। आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का, 2.4% लैंड है, 4% पानी है। इससे आम लोग, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो,
मॉल हो, जहां भी जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जनसंख्या अपने बिल पर आने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विमर्श को जानबूझकर सोच समझकर भटकाने की कोशिश होती रही है, जिससे उद्देश्य पूरा ना हो। मैं 3 एकेडमिशियन का नाम लूंगा, रोजर जेफरी और पैट्रिशिया जेफरी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून हैं, उसी तरह से मोहन राव, पीके दत्ता, ये सब बड़े एकेडमिशियंस हैं। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था, जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए। अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए। संभवतः एक लंबे अरसे के बाद जनसंख्या के विमर्श को प्रधानमंत्री जी ने उस संकीर्णताओं से बाहर लाकर एक सेकुलर डोमेन में रखा है, जिसमें संसाधन है, जन्म दर है, हमारा जीवन पद्धति है। मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1996 में जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को नापने के लिए एक नया फॉर्मूला आया, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। वह है ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो लैंड और वाटर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव संसाधन है, वह प्रति व्यक्ति कितना है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर कहा गया। दूसरा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन पद्धति में, लाइफ स्टाइल में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह कितना है। तो आज भारत को जो उपभोग होता है, वह प्रत्येक व्यक्ति 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर है। एक तीसरा शब्द है बायो कैपेसिटी। जो संसाधन हमारे पास है, वो कितना संसाधन उपभोग करने के बाद पुनः पैदा ले लेता है, यानी रीजनरेट होता है। रिसोर्सेज गेट रीजनरेटेड ऑटोमेटिकली, वो हमारे पास 0.43 है। यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग जिन चीजों का करता है, उनका जो पुनरुत्पादन हो जाता है, उसके बीच का गैप 187% है। यानी हम इकोलॉजिकल डेटर है। और यदि यह पद्धति 30 वर्षों तक चली रही तो हमारे संसाधन इतने कम हो जाएंगे, चाहे विकास की प्रक्रिया जितनी भी तेज हो, कि हम अपने लोगों को वह चीजें नहीं दे पाएंगे जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए। एक और दूसरी बात है, जब दुनिया की जनसंख्या 5 बिलियन क्रॉस हुई तो लगभग 1700 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन भारत में जनसंख्या विमर्श पर एक दूसरी बात कही जाती है। पहले तो संकीर्णता की बात, जो मैंने कहा, सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर सांप्रदायिक क्षेत्र में ले जाकर इस जनसंख्या विमर्श को हास्य पर ले जाया जाता रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने उसे बाहर निकाला, अब मैं एक दूसरी बात पर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहस में कुछ लोग हैं जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत कम नजर आती है, जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या से डेमोग्राफिक डिविडेंड नजर आता है कि हमारी 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले। क्या डिविडेंड ले? कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग
सऊदी अमेरिका, सऊदी कंट्रीज में हमारे लोग जाके मजदूरी करें? क्या वो आपको राष्ट्रपति बनाएंगे? वहां पर बनाएंगे? क्या वो आपको बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे? मुट्ठी भर लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बाकी लोगों से कहते हैं कि वो बाकी जगह पर मजदूर नहीं है, डिविडेंड लाओ देश के लिए। कोई भी सभ्य देश बाहर की उस मजदूरी की आमदनी पर अपने नागरिकों को नहीं छोड़ता है। हम रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तब जब देश में इसकी कमी होती है और जनसंख्या के डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर उसको भटकाया जा रहा है। इसका एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की बहुत सी मल्टीनेशनल कंट्री हैं, इस जो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, उनको सस्ता मजदूर चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, जिसे तृतीय विश्व के देश वो कहते रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कहते रहे हैं, उन्हें सस्ते मजदूर के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कि पूरे विमर्श को, पूरे डिस्कोर्स को वे भटकाने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर। एक तीसरा जो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने पर एक बार बार बात आती है, वो बहुत ही रैशनल बात है कि हम जनसंख्या में रिप्लेसमेंट लेवल, अर्थात हम हमारे दो की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो परंपरागत हमारा अध्ययन का तरीका है, यदि उसे देखें तो सचमुच में हमारे रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, वहां पहुंच रहे हैं। जो नारा एक समय 1970 के दशक में उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी, हमारे दो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं होने के कारण, प्रतिबद्धता नहीं होने के कारण, या तो आपातकाल में लोगों के साथ ज्यादती की गई, और मुझे कहना पड़ रहा है कि 75 के दौरान 1975-76 में यदि लोगों के साथ वह आक्रामक ज्यादती नहीं होती कि बच्चों को पकड़कर उनके फैमिली प्लानिंग में बच्चों को लाया जाता था, शादीशुदा लोगों को लाया जाता था, जो एक तरह से भारत की जनसंख्या पर आक्रमण हुआ, भारत की सभ्यता पर, भारत के सभ्य लोगों पर आक्रमण हुआ। यदि वह नहीं होता तो संभवतः जनसंख्या पर कानून बनाने में, विमर्श में लोगों को डर नहीं लगता। वो 75-76 का जो भय है, जो घोस्ट है, वह आज भी हमें पीछा कर रहा है। तो मैं आना चाहता हूं कि रिप्लेसमेंट लेवल की बात कही जाती है। सभापति महोदय, जनसंख्या पर विमर्श, जनसंख्या पर शोध एक नए नए रूपों में हो रहा है। परंपरागत शोध में TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कही जाती थी। TFR का डेफिनेशन है, एक महिला, एक मेरी मां और बहन अपने फर्टिलिटी की आयु में, पूरी आयु में, जो 14 साल से लेकर 49 साल तक एवरेज माना जाता है, एक वर्ष ऊपर नीचे लोग कह सकते हैं, लेकिन साधारणतः 14 ईयर्स से 49 ईयर्स का है, कितने बच्चों को जन्म दे सकती है औसत। यह TFR का डेफिनेशन है। तो उस डेफिनेशन के अनुसार साउथ इंडिया के बहुत से ऐसे राज्य हैं जो भारत की एवरेज पॉपुलेशन से भी कम है या उसके बराबर है, यह सत्य है। और जो इंपावरमेंट इकोनॉमिक ग्रुप है, इंपावरमेंट एक्शन ग्रुप के 9 राज्य हैं जहां देश का 48% पॉपुलेशन रहता है, वो TFR में एवरेज से ज्यादा है। उसी TFR के दायरे में मैं देखूं, देश के 174 जिले जहां हम एवरेज राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, तो 72 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर TFR 4 है। लेकिन मैं TFR के पूरे अवधारणा को यहां खारिज करता हूं। आज सदन को मैं अपनी पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं कि TFR का पूरी अवधारणा क्यों गलत है। और मैं जिन आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं, वह भारत के सेंसस कमीशन ने पिछले 20 साल से वो आंकड़े दे रहा है, लेकिन डिस्कोर्स में राजनीति आने के कारण, संकीर्णता आने के कारण सेंसस कमीशन के उस आंकड़ों को लोग गौर नहीं कर रहे। और जो विमर्श पर ऐसे ताकतें हावी हैं, जो सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर हावी हो जाते हैं, वे उन आंकड़ों को सामने नहीं आने देते हैं। सभापति महोदय, यह पश्चिम के द्वारा TFR बनाया गया है, वो ठीक भी है। हर देश, हर सभ्यता अपने अनुभवों से, अपनी परंपराओं से अपने मानक तय करता है। तो मानक क्यों नहीं तय होगा? एक महिला 14 साल की आयु में या एक महिला
49 साल की आयु में कितने बच्चे को जन्म देती है, तो मानक वैज्ञानिक ही है। तो उस मानक से मैं अलग हटकर कहना चाहता हूं कि एक है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, TMFR। TFR उनके लिए उपयुक्त क्यों है, इसका मैं कारण बताना चाहता हूं। OECD, हम सब जानते देशों का एक ग्रुप है। OECD के 11 देश ऐसे हैं जिसमें चिली है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें आइसलैंड है, जिसमें इटोलिया है, जिसमें नीदरलैंड है, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें फ्रांस है, स्लोवेनिया है। उन देशों में विवाह से पूर्व हमारी जो वहां की मां और बहनें हैं, जो बच्चों का जन्म दर है वो 50% से अधिक है। पोलैंड में 60% है। अमेरिका में उन बच्चों जो अनमैरिड मदर्स के द्वारा पैदा हुए बच्चों की संख्या 40% है। इंग्लैंड का मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि मैं इंग्लैंड को एक ऐसा देश समझता था जो कि तुलनात्मक रूप से कंजर्वेटिव कंट्री माना जाता है। वहां 2019 में 3 लाख से अधिक बच्चे मैरिड मदर से पैदा लिए और 2 लाख से अधिक बच्चे अनमैरिड मदर से पैदा लिए। इन कारणों से TFR उचित है। चाहे यूरोपियन नेशंस के देश हों, यूरोपियन नेशंस के देश में वे बच्चे जो अनमैरिड मदर से पैदा लेते हैं उनकी संख्या 50% से एवरेज ऊपर है। तो अमेरिका 40%, इंग्लैंड 47%, OECD कंट्री 50% प्लस, चिली में तो 69% है। तो कुछ कंट्री तो ऐसे है जहां 71% है। तो इसलिए TFR का कंसेप्ट उनकी अपनी परंपरा के अनुसार, मैं उसको कंडेम नहीं करता हूं। हर देश की अपनी परंपरा होती है, जीने की शैली होती है, जीने की पद्धति होती है। भारत में मैं उन आंकड़ों को ढूंढ रहा था कि हमारी मां और बहनें विवाह से पूर्व कितने बच्चे पैदा करती हैं। मैं ढूंढता रहा, परिश्रम करता रहा, पुस्तकालय से लेकर गूगल सर्च तक जाता रहा, मुझे कोई आंकड़ा नहीं मिला। कुछ आंकड़े हो सकते हैं लेकिन वे आंकड़े अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वो आंकड़े होंगे भी तो 0.001% के आसपास होंगे। इसलिए भारत में जो सेंसस कमीशन ने एक फॉर्मूला निकाला है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात विवाह के बाद एक महिला अपने आयु में फर्टिलिटी रेट के दौरान कितने बच्चों को जन्म आधार पर भारत की फर्टिलिटी रेट, वास्तव में यदि मैं एक साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं, एक बच्चा 7वीं क्लास तक 0 अंक लाता है, 7 से 10वीं क्लास तक 90% अंक लाता है, एवरेज क्या निकलेगा? TFR वही है। आप उस डिल्यूजन में मत रहिए। मैं भारत में बताना चाहता हूं, बिहार में टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट 6.3 है, झारखंड में 6.1 है, मध्य प्रदेश में 5 है, छत्तीसगढ़ में 5.5 है, राजस्थान में 4.7 है, उत्तर प्रदेश में 6.8 है, उत्तराखंड में 2.8 है, उड़ीसा में 3.8 है और इंडिया का टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट एवरेज 4.9 है। गांवों में 5.1 है। अच्छा, मैं अब दक्षिण के राज्यों का कुछ बताना चाहता हूं जहां कहा जाता है कि TFR कम हो रहा है। उसमें आंध्र में 3.4 है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, कर्नाटका में 3.3 है, केरला में 5.1 है, तमिलनाडु में 3.7 है, केरल में 5.1 है और तेलंगाना में 3.6 है। चूंकि अन्य सदस्यों को बोलना है, मैं कंक्लूड करने से पहले 2-3 ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, बाद में मैं बोलूंगा जब डिबेट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि बिल कानून का रूप ले। सभापति महोदय, we should not be in delusion. Average is always delusionary. जिन सवाल है कि संसाधनों पर बोझ कितना है, एक फ्लाईओवर पर बनता है बोझ कितना है, एवरेज कितना, ये महत्वपूर्ण नहीं। हमारे मित्र मनोज झा जी के पास कितने बच्चे, अगर एक बच्चे हैं, मेरे पास 11 बच्चे हैं, एवरेज 6 आता है, लेकिन फ्लाईओवर तो उन 12 बच्चों का बोझ सह रहा है। उसे मनोज जी के 1 से हमारे 12 से कोई अंतर नहीं है। तो इस डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण एक समाजशास्त्रीय विषय है और समाजशास्त्रीय विषय होने के कारण जो औसत वृद्धि के साथ साथ
जो सामाजिक स्तर पर वृद्धि में जो अंतर है, जो भौगोलिक स्थिति में, रीजनल क्षेत्रीय स्थिति में जो वृद्धि का अंतर है, उन सब को हमें स्वतंत्र मन से, कि सदन कटुता की मरुभूमि नहीं है, सदन तो बहस के लिए जीवंत एक हरियाली है, जहां पर हम अपनी बात ईमानदारी से देश के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में रखते हैं। और अंतिम शब्द में कहना चाहता हूं, जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, बायो कैपेसिटी घटता जा रहा है। आप ध्यान रखिए, हम आने वाली पीढ़ियों का के लिए जो संसाधन था उसका उपभोग करके कहते हैं नहीं सब ठीक है। वी आर ईटिंग दी रिसोर्सेज मेंट फॉर दी पोस्टरिटी, ये हमारा अधिकार नहीं बनता है। इसलिए पीढ़ियों को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए, देश की भावना को देखते हुए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा था, उसी कारण से मैं भी संयमित हुआ। डिस्कोर्स में मेरे भी कई आयाम थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि संसाधन और लोगों के अनुपात को देखो, उसी आधार पर अपने निर्णय करो। ये निर्णय जितना मेरे हित में होगा उतना आपके हित में, जितना वर्तमान में होगा उतना भविष्य के लिए होगा। और इस बिल में मैंने एक प्रावधान दिया, वो कह के मैं बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं बिल में उस प्रावधान की बात कर दूं, नहीं तो उस बिल में मैंने एक प्रावधान दिया है, बाकी तो दिया है कि किस पर क्या कोर्सिव या कोई पॉजिटिव लागू होगा। एक बात मैंने कहा, ये कानून बनने के बाद 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होगा। 18 महीने तक एनजीओ, कॉलेज, स्कूल के लिए कैंपेन करेंगे, इसलिए कि कोई मां और बहन यदि कानून बनने के दिन या उसके आसपास कंसीव कर लेती है तो उनके बच्चे पर हम अत्याचार न करें। 18 महीने तक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स करें, लोगों तक पहुंचे, जिससे कि यह ना कहा जाए कि आज की कम्युनिकेशन एज में कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लोगों में ज्ञान नहीं है। इन बातों से ऊपर उठिए। धन्यवाद राकेश जी, अभी बोलने का मौका नियंत्रण पर कानून आपको बनाने पुनः के मिलेगा। पक्ष में मैं सदन से अपील करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मोशन मूव्ड नाउ श्री एल हनुमंतैया जी। श्री एल हनुमंतैया, श्रीमती यम्मी याग्निक, तो श्रीमती यम्मी याग्निक, प्लीज सेंड योर नेम हियर। नहीं, प्लीज सेंड योर नेम हियर। माननीय सदस्यगण, अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। प्लीज नो प्लीज। यह मैं आपको जस्ट सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए, अभी हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा कर रहे थे। नियमतः बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले तक आप नाम भेज सकते हैं। आज तक लोग नाम भेज रहे हैं, इसलिए अगर आप बोलना इस पर बोलना चाहते हैं अब्दुल वहाब जी, तो आप प्लीज नाम भेज दीजिए। निश्चित तौर से मौका लिखकर आप भेज दीजिए, नाम जरूर मौका मिलेगा। डॉक्टर श्रीमती यम्मी याग्निक जी, प्लीज। How many minutes? 10 minutes? टाइम है सर इनका कुछ? हाँ, बोलिए। Thank you, sir, for giving me this opportunity. It's very surprising that at a time when we are facing an unprecedented crisis the world over, we are talking about human rights, we are talking about human development, we are talking about going to the Mars, and we are talking about seeing that every person on this earth gets whatever the person is entitled to be, to merely by being a human being. A bill is moved by one of my colleagues here on population regulation bill. So we might be in competition with lots of countries the world over on many issues. But to try to bring some kind of a motive, to bring some kind of an angle by way of controlling population, I think bringing a law or a bill makes some kind of an absurd picture before me as an individual. I went to the bill brought by my learned colleague. I also heard his views on the same.
I would not like to answer to the motives which are behind the bill, because any bill that is brought has a statement of object and reasons. Why do you want a particular bill? A bill becomes a law. That law is meant for the people of a nation. Law is meant to serve justice in the end. And justice is, over the ages, from the time we had traditions, norms, culture, folklore, then we went to the Enlightenment age, and then we went to an age where we had systems of law and legal systems in place which delivered justice to the people as the time required over the centuries. And today we are in the third decade of the 21st century, talking about giving justice to the people of the world, because we are one world. That's what we talk about. The Honorable Environment Minister is here, and he talked about one grid, one connection with all the countries of the world. And so I'm talking about a global world. In this situation, when we are talking about population regulation bill or controlling the population, or talking about bringing an embargo or a limit on giving birth to children, bringing human beings in this world, I do not understand the rationale of the bill. It can be said that, well, if population is controlled, if there is birth control, there can be more use of resources, people will get more amenities, they'll be able to have a nice way of life, and the government will be able to provide sustainable development to the people of the society. Well, these are very good arguments to be made in support of the bill. But when a bill is brought with an ulterior motive, with some kind of motive that you want to control population, you want to have certain sections of the society, certain peoples of this world to stop giving birth to more children in the name of population control, in the name of giving them some more facilities, I think it does not stand on its feet. It crumbles because the very idea of human development, the very idea of giving human rights to people who are born as human beings gets totally shattered by this particular kind of a bill, sir. Sir, the bill says that, well, there will be incentives, there will be benefits, incentives given to people working in the public sector, people working in the private sector, and there'll be benefits to people who would go for one child, two children. But sir, what is all this about in the end? All these incentives and all these benefits the bill is talking about somewhere points to the inefficiency of the governance model. Is the government of the country unable to provide sustainable growth, sustainable development? It cannot handle its own population? What is this meant for? If you are trying to segregate sections of society by bringing majoritarian view in this particular bill, a minority view, I think that doesn't serve the purpose, because we are bound by the Constitution of this country. The Constitution has given several fundamental rights and directive principles of state policy, and it is for the government to decide what it would be doing for its own people. But a private bill that has come today has opened my eyes, and I'm sure it will open the eyes of all the people sitting here who are bound by the Constitution of this country. Ultimately, it narrows down to human development. Ultimately, it narrows down to what you are giving to the people. You are not able to give, so you snatch away what the person has. We are, sir, discussing surrogacy bill. We are discussing designer babies, because today we talk about single parents having babies of their own. We are talking of a world where we have LGBTQ rights we want for the human beings, whether they can have children or not, whether they have right to the reproduction of human beings.
And here is a bill that is talking about going against nature. Sir, we live in a country which has a history of thousands of years. We have a history where we consider the children as our resources in a sense. They provide the love their parents want in their old age. But what we see, sir, on one hand, there is not a word in the object and reasons or the motive to bring this bill. What are we doing with our children on the streets, abandoned children, children in shelter homes, children in remand homes, children in juvenile homes? Has there been any bill to say that yes, we will care for these children, and because of this situation we need to enlighten and bring awareness to the citizens of this country that there should be some kind of a population control? That can be a milder way to put it. But you have ignored the wide section, the class of the people in this country, and that is the children, the vulnerable class. Sir, they're entitled to rights, they're entitled to entitlements. But a newborn child on the street, an abandoned child on the road, put on the temple streets. We are in India, we talk about Sanskruti, we talk about duties, we talk about our Mahan Sanskrutis and lineage, but we find day in and day out small babies put in the cradles on the church floors, on the temple, abandoned children. Are we giving these children their due? We are talking of not bringing children in this world by this population control bill. So are you going against nature? Are you going to stop human development? Are you going against the human rights of being born? You're talking about this kind of a philosophy in a bill where you are totally unable to show that yes, this government has failed. The present governance model has failed. It cannot look after its population. And so there should be control on the population. Is this the motive? Is this the thrust of the bill? I'm asking myself, is this the way you talk about the people of your own nation? That okay, if you have one child or you have two children, you will be able to give better education, you will be able to give them better resources, you will be able to give them a better life. Who promises that? Supposing the bill is passed, who promises them these facilities? Sir, the pandemic has shown us stark nakedness that we have been unable to even bring those children and students who have been out of the system because of the pandemic to re-enter the education system. We do not know the ratio of dropout. We do not know how many girl children have stopped going to school because of non-security or safety reasons. We have not been able to see that we create digital infrastructure to give education to these children, and we have not been able to say that yes, today our healthcare system is there, and so we'll be able to provide for the people of this country. So two more issues I would like to say. That what would you say to people who would start going for sex selection because in a country where you want male child and you are trying to bring population control bill, are you going to start bringing criminal angle in the whole thing by bringing this bill? Sir, this population control bill is totally not required and should not have been brought by my learned colleague. With whatever intention he has brought this population control bill, he should have concentrated on seeing that the resources of this country are geared towards human development. The current situation should be that the government should make itself so strong, so capable, so efficient that it uses the resources for the existing population rather than talk about bringing curbs on population bill. And on a lighter tone, he should have put two more things. I know this bill is never going to be passed, but two things. He has not mentioned about already people who have got 5 children, 7 children. And he has not talked about that there should have been an incentive or there should have been an embargo, that those who have not married and don't have children cannot come in public life. You should put that. This is a lighter tone. So when you talk about population control bill, you should have a holistic approach when you put objects and reasons. So I say that this is absolutely a misplaced bill. You should have thought before bringing the bill. Thank you. Should not be entertained. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha, not present. Dr. Fauzia Khanji.
Lok Sabha? Not present. Shri Abdul Wahab ji. Thank you, sir. When I heard Madam Doctor's address, actually I am not supposed to stand here because everything she told. Only one thing I want to mention about me, especially Rajiv. I am second among 9, second son. After that, according if this law passed before me, 1951, after me, no brothers, no sisters, okay. But for me, now 4. It is according to criminal, 4 boys. For my boys, now only 2, as per bill. It is not by force, not by law. It is because of, okay, whoever government came before, their family control, teaching us about family population control and how to give them more education. We agree on that, but not by force. They have to, the government has to educate our generation, not by bill, by force, incentives. One of my Kerala's priest was giving incentive for producing more than 5. Whoever, one priest in Kerala, he was publicly addressed that any family who is producing more than 5 will get incentives in their colleges, they'll be giving something extra 5,000 rupees also. So these are all ulterior motives. I am not elaborating on Madam's address. But as I am telling our good friend, learned friend Rajesh ji, this is not by force. Okay, of course. If he is focusing my community, Muslims, why they are producing more before or now also? No jobs, other than what to do? There should be some jobs, some education to provide that sort of facilities to the unprivileged people. Automatically it will get reduced. I am not for making 10, 15, 20, not just like my father me, not just like me, my kids. Why? I am we all know what is happening. From the same community all this happened. If this is to control Muslims or whoever it is, ulterior motives, she was not telling openly. I am telling my Rajesh ji, this government, BJP government, let them give education to the unprivileged, uneducated, unemployed people. There will be some other job rather than making kids. So I urge upon government and Rajesh ji to give more facilities, especially minorities. Now this government is doing, I am not denying. Yesterday in my speech, I appreciate the skill development program by this government. Skill development program. I am also running the skill development. I got 18 crores from the Ministry of Minorities and Waqf to establish skill development park in our college and all. I agree, I appreciate. Instead of doing this one, don't concentrate on the other part. That is why I request Rajesh ji to withdraw the bill and give more importance to educate the people, those who are producing more. That is my request. Thank you very much, and I totally agree, Rajesh ji. I wish you withdraw the bill for the sake of the whole population of this country, especially because China is giving incentive to make more. And our strength in India, not just like sending what you call only laborers to Gulf and all, no. Strength is young people. Yeah, now the government is saying young people, young energetic Indians are there for any job, not just like before, only tea operators, Suleimani operators, no. Now people are going from here, skilled people, making more money to foreign remittance only because of this extended family or whatever you say. So don't restrict to maybe you are having, I don't know how many kids you got or how many kids your father got. Our Prime Minister is not having even one. So please, Rajesh ji, please excuse me. You too, you got two. That is why you are telling 2. If you are having 4, you will be telling 4. I got 4, but I feel I am very bad. I am not having a single girl. I tried my level. My wife told no.
No, my encourage, my wife told enough is enough. And thank you. So I got now 3 granddaughters. Thank you very much. Thank you. Dr. Vikas Mahatme ji. Dr. Vikas Mahatme. Thank you, Chairman, sir. Mic on. Just Mahatme sir. माननीय मंत्री जी. Sir, Rule 238, Sub-Rule 2, whenever any member speak, not speak personally. It is not dignified for the member of parliament. So whatever the says by the member, according to the Rule 38, Sub-Rule 2, it's a personal. It must be deleted from the record. I withdraw. We'll examine it. Whatever should not be there, couldn't be there. Dr. Mahatma ji. थैंक यू चेयरमैन जी. मैं धन्यवाद दूंगा राकेश सिन्हा जी को जो ये एक महत्वपूर्ण बिल उन्होंने लाया है. पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, ये पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल है और इसके बहुत ज़रूरी है, वो उन्होंने भी बताया. लेकिन मैं भी फिर से दोहराना चाहूँगा कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिसाब से 17% है और सरफेस एरिया जो ग्लोबल सरफेस एरिया जो है उसका 2.47% है. यानी हम 17% पॉपुलेशन 2.47 सरफेस एरिया जो भी है या भूपृष्ठ है उस पर हम निवास कर रहे हैं. हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. और यह सरकार का काम है कि लोगों को अच्छा डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ यदि होना है तो वो गाइड करे कि किस तरीके से योजनाएं बनाए जिस तरीके से लोगों को अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ जीने का अधिकार मिले, जो हम सब चाहते हैं. और यहाँ रिसोर्सेज में सिर्फ हम पानी की बात करें तो 4% ऑफ पोर्टेबल वाटर यानी जो उपयोग में ला सकते हैं ऐसा पानी हमारे पूरे यानी भारतवर्ष के लिए है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन रेगुलेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे संसाधन भी कम हो रहे हैं. दूसरा ये है कि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है उसमें 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स भी हैं. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस का एक इंस्टीट्यूट भी है. और इनका यदि स्टडी हम देखते हैं जो कि कोई पार्टी से जुड़ाव नहीं रहता है, इनके स्टडी से भी सबको पता चल जाएगा कि भारत में पॉपुलेशन रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता है. तो इसके लिए काम करना ज़रूरी था और यह बिल उन्होंने लाया, इसलिए मैं उनको फिर से धन्यवाद दूंगा. यदि हम पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए कुछ नहीं करते तो हमारा जो है उसकी भी स्टडी हुई कि हम कितना पीछे जाएंगे. 13% पर कैपिटा जीडीपी जो है वो हमारा कम होगा, ये हमें समझना चाहिए. 12 लाख मैटरनेटल डेथ बढ़ेंगे, ये भी होता है, और 29 लाख इन्फेंट डेथ्स भी बढ़ेंगे. तो ये सबके लिए हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो, जितनी भी हम हेल्थ सर्विसेज में इनपुट्स देंगे उससे और बढ़िया हेल्थ सर्विसेज बढ़ेंगे. और 27,000 करोड़ रुपीस का खर्चा भी बढ़ेगा. यह हमें सोचना चाहिए. ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए कह रहा हूँ मैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए तो और होगा. इसलिए पॉपुलेशन रेगुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट है वो कम हो गया है, मैटरनल मॉर्टालिटी रेट वो भी कम हो गया है. इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट जो था वह 2015 में 35 था, वह अभी 28.3 पे आ गया है. इतना जल्दी हम इसको कम कर रहे हैं, यानी हेल्थ सर्विसेज से हम अच्छा काम करवा सक रहे हैं, ये सही है. लेकिन इसमें यदि हम पॉपुलेशन रेगुलेट करते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है यह भी सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत इसे महत्वपूर्ण भी है. उन्होंने नैरोबी में जो एक समिट हुई थी, जो कि कैरो में 25 साल पहले इसके ऊपर जो समिट हुई थी, इसके बाद में ये
नैरोबी में हुई 25 साल के बाद में, 25 इयर्स के बाद में, उसमें उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन रेगुलेशन जो हो वो स्वैच्छिक हो, वॉलंटरी हो, वो पूरे इन्फॉर्म यानी उसकी पूरी जानकारी देने के बाद ही वो उसका उपयोग हो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। और तीसरा ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी अवेलेबल है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 चिल्ड्रन हम बोलते अंतर जो है, वो बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी सबको हो और वो ज़्यादातर फ्री में हो। तो ये जो उनका जो कहना है, उनका जो विजन है, इसके लिए मुझे लगता है हम काम करेंगे तो पॉपुलेशन रेगुलेशन और ये बिल के जरिए पॉपुलेशन रेगुलेशन जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूँगा, अमेंडमेंट भी चाहूँगा कि 2 बच्चों के बाद यदि हम किसी परिवार को दंडित करते हैं तो इसमें एक परेशानी है कि जो बच्चा पैदा होता है उसे हमेशा लगेगा कि इस देश में मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ और यह देश के लिए बहुत हानिकारक विचार है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि दंडित करने के बजाय और कुछ कर सकते हैं तो वो बेटर होगा, क्योंकि कोई माँ बाप की गलती की वजह से कोई बेटे को उसका अपराध की शिक्षा हो या पनिशमेंट हो तो क्या हम ये सही मानेंगे संविधान के रूप से? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको दंडित करने के बजाय और कुछ उपाय योजना होना चाहिए। दूसरा इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ेंगे। फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ेंगे इसलिए कि यदि दूसरा बच्चा यदि यानी फीमेल है या बच्ची पैदा होती है तो घर वाले ज़्यादातर मैंने देखा है, डॉक्टर होने के नाते देखा है कि वो कहते हैं कि दूध मत पिलाओ, और वह धीरे धीरे डेथ हो जाती है लड़की की, और इसलिए क्योंकि उनको दूसरा लड़का चाहिए, तो ये नंबर भी बढ़ सकता है। और मुझे लगता है तो ये इसके लिए दोनों चीज़ों के लिए हम कोई और उपाय योजना करें। अभी तक के पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। अभी फिलहाल 2016 में मोदी जी के अगुवाई में और माननीय जेपी नड्डा जी थे हेल्थ मिनिस्टर, तब मिशन परिवार विकास करके एक मिशन था जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हाई फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि 145 डिस्ट्रिक्ट्स वेर आइडेंटिफाइड, और उनमें उन लोगों तक के पहुंचने की कोशिश की गई और जारी है कि जिनको ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी की, जिनको ज़रूरत है इसके बारे में कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलने की, उन तक के पहुँचें। और यह टारगेटेड अप्रोच से हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला और यह सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुँच पाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी हम डिस्ट्रिक्ट तक के पहुँचे, और जैसे कोरोना में पहले हम डिस्ट्रिक्ट का ये रिस्ट्रिक्शंस करते थे, अभी हम फ्लैट स्कीम तक के पहुँचे हैं और फिर अकेला आदमी फिर उसको आइसोलेट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम जो टारगेटेड अप्रोच ले, जैसे स्लम एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, या जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, ऐसे एरिया में जाकर ऐसे लोगों के पास जाए और उनको इसके बारे में जानकारी दे पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए, ताकि हम हर परिवार को समझाएं और वहाँ तक कि हम पहुँचे। और टेक्नोलॉजी के उपयोग से यह संभव है आज। तो मेरा कहना यह है कि एक भी परिवार ऐसा न हो कि जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में जानकारी ना होने की वजह से या वो ना मिलने की वजह से उसे बच्चा हो रहा है या वो बच्चा पैदा कर रहा है। ये यदि हम टारगेट लेते हैं तो यह सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये मिशन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। इसीलिए आज हम 2.1 के पास टोटल फर्टिलिटी रेट लेके आए हैं। इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो ऊपर से हमें उन्होंने कहा है बिल में, बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि सेक्रेटरी अलग हो, डिपार्टमेंट अलग हो, इसके लिए फंड्स की सुविधा हो, और ये फंड्स यूटिलाइज होने के लिए
नीचे आशा वर्कर से लेकर या जो भी अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं पैरामेडिक्स, उनको इंसेंटिवाइज यदि हम करते हैं इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि यह जल्दी ही हम पहुंच पाएंगे और ये फर्टिलिटी रेट कम करेंगे। और टेक्नोलॉजी के जरिए इसको मॉनिटर भी किया जा सकता है, मंथली मीटिंग्स ली जा सकती है, ताकि हम टोटल फर्टिलिटी रेट और कम करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है कि महिला का सशक्तिकरण हो। आज बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, यह निर्णय वो महिला नहीं ले सकती है, यह निर्णय परिवार लेते हैं। सासू माँ बोलती है कि बच्चा चाहिए, फिर पति भी बोलता है कि बच्चा चाहिए। ऐसा ना होते हुए वह महिला तय करे कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं। यह अधिकार हम जब तक माननीय नहीं देंगे। जी, आपके बाद आपके पार्टी से 3 और स्पीकर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ठीक है। उसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का विकल्प हो और फ्री में मिले। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जो आदरणीय मोदी जी का मंत्र है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम ये जो पॉपुलेशन रेगुलेशन में काफ़ी आगे जाएंगे। अभी बताया गया कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को ध्यान में रख के किया गया लगता है, लेकिन ये मत समझिए ऐसा कुछ है नहीं। आप यदि कश्मीर का टोटल फर्टिलिटी रेट लेते हैं तो वह 1.6% है। वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। तो ये इसलिए ये समझना अच्छी बात नहीं है कि यह एक समुदाय के लिए यह लाया गया है, ये पूरे देश के हित के लिए है। इसे इस तरीके से देखना चाहिए और उसमें एजुकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये हमने ये भी देखा कि इसी के लिए 1975 में बहुत यानी अत्याचार भी हुए थे। तो उस वक्त क्या उसका उद्देश्य कोई कम्युनिटी के लिए था क्या? नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि उसको इस नजरिया से ना देखा जाए। हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन सबको पता है कि 100 कौरव से 5 पांडव ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि चिल्ड्रेन आर आवर रिसोर्सेज डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि पॉपुलेशन है तो क्या हम वो मैनुअल लेबर्स आज देखते हैं जो काम रोबोटिक्स या बाकी से हो सकता है, स्कैवेंजिंग आज आदमी लोग कर रहे हैं, तो ये सब लेबरर्स है। ये सब लोगों को हमको वो काम नहीं करने देना है, उनको भी एक डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ मिलना चाहिए। इसलिए हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उनको हम स्किल्स नहीं दे पाते, शिक्षा नहीं दे पाते, स्वास्थ्य नहीं दे पाते। स्टंटेड ग्रोथ जो हो रही है 5 साल के लिए, वो पूरी तरह से हम बंद नहीं कर सकते, यानी स्टंटेड ग्रोथ ना हो इसके लिए उपाय योजना नहीं कर सकते। इससे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे। और यह डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है जब ये हम पूरा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो ही डिविडेंड मिल सकता है। आज वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन यदि पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका प्रमाण कम हो जाता है। यह डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना बदले, इसलिए यह बिल लाया है और इसलिए मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा ये कहना है कि ये स्वैच्छिक रहे और पूरी जानकारी के बाद रहे और महिलाओं को सबलीकरण के साथ में रहे। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय डॉक्टर एल हनुमंतैया जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. You have a speaker after you as well, so you keep. Sir, the bill, private member bill, brought by our friend Shri Rakesh Sinha ji, I hope it is with good intention, not with any ultimate motives of targeting any groups. I don't believe it because he will not do it. I believe that he will not do it. But the reasons given in this bill, the reasons given in the bill, see, augmenting the availability
accessibility, affordability of quality reproductive health services, and intersectoral development by the state government and central governments. This is one factor. The second factor will be, he is worried about the socio-economic disparities across population groups and religions, and render equal opportunities to all irrespective of age, sex, religion, caste, class, race, residence, language, etc., to achieve the fullest development potential for matters connected therewith and incidental thereto. This is the reason given to the bill. Sir, I just wanted to go one by one. See, with regard to food is the factor of this country, the study says food wastage, it is estimated 40% of the food produced in India is being wasted before it reaches the consumer. In other words, hunger is not lack of, it is because of lack of access to education, health care, and basic necessities do not appear due to the overpopulation. This is what the study says. Sir, if this is the fact, what is the action that we have to take up is the question. The question is, we have to take care of the education of all the sections of the country. That is number one. Sir, still the national average is 70% approximately. Another 30% is the uneducated class in the country, which forms about 35 to 40 crores. And those sections are living in rural areas, in tribal areas, in inaccessible areas of this country. We could not reach them educationally. Sir, this is the basic problem which we have to address, which is the necessity. Sir, in almost all, if I say it may be wrong, but in government school particularly, we lack of infrastructure. We don't give them basic necessity like toilet and water in most of the government schools, especially rural area. And the girls, which was already told by my colleagues, the girls' education standard is still below. That is because we have not given them the proper infrastructure like basic facilities like water and other things. Sir, this is a very, very important issue which we have to address today. Sir, regarding the health care and the basic necessities, sir, even today, our rural population has no access to hospitals during their deliveries. Lot of lady where they are going to be delivered in rural areas particularly are being subjected to death because they have no access, even a nurse in the rural area. Honourable Member, you have one more speaker, so just keep that in mind. Yes, you have only 2 minutes left. I'll still allow a couple of minutes. Okay, we will take care of it. Sir, the other important issue which I wanted to tell here, population growth can coincide with increasing abundance of natural resources and does not necessarily lead to scarcity. The concern is that despite birth rates declining dramatically across the world, sir, without getting any law, in the whole world, the birth rate is dramatically declining. That is also to be taken note in this case. Sir, the other important issue which I wanted to bring it to the notice through you, sir, China has made an experiment. It is very correct that we have to compare with China.
because the population-wise we are almost similar. Honourable Member, please start concluding. And because you're already out of time for your party. Sir, I will One more request speaker. my party people to contribute their time to me. Your time for the entire party is over now. Oh, then Entire I'll party. finish So it in please 2 minutes. conclude, because you have one more speaker in the party. Yeah. Then I'll finish it in 2 minutes. Sir, with regard to China, see the reduced productive as China's failed population policy, which is not affected the sex ratio, but reduced the productive workforce and resulted in an aging society. I request Professor Sinha ji to look at this point, whether India today we are young India. We have a lot of potential. But if you introduce the policy of this kind, you will be landed in the aging India, which is going to be a burden to the whole society. That has to be taken care today itself. Sir, the last point which I wanted to make is, Mr. Sinha ji told one thing. The population control was told by many people, not one or two, a lot of people have told this. And he referred one thing, that is sovereign democracy. Sir, what is there in public domain? That I and you may not believe it. But what is there in the public domain? Sir, according to me, in the public domain, a community, a religion is targeted by the prachar of the people. I don't know who has made that. I think it is believed that some parivar has made this propaganda across the country. Please conclude. I have already given you a... Half a second, I'll complete. Across the country, this propaganda has been made that a particular religion or a community is producing more, and that is why the population is going up. But it's totally false. That is why this is called Please conclude. saffron Honourable Member, I'll have to thinking. move on. So, Please just one sentence, I'll finish it. Please. This myth has to be broken. We should not believe this. From an august body like this must tell the country this kind of propaganda should be stopped, and this is not the fact. So I oppose this proposal of bringing a law into these kind of things. Otherwise, take action on so many socio-economic factors of the country and see that we are a healthy society and a healthy Bharat. Thank you, sir. Thank you. Dr. Fauzia Khanji. Thank you very much, Vice Chairman, sir. As I'm talking on the bill, I would like to first express what many of my colleagues have raised suspicion about, that there is some ulterior intention that is there behind bringing the bill. I'm sure it is not so, and my colleague has brought this bill with very clean intentions, because everyone agrees that population regulation is a very, very important issue, and I congratulate him for having brought this topic in the limelight. But at the same time, I must not disagree or blame my colleagues, because yes, there is an environment rampant everywhere, especially on social media, and the between the lines attitude of the government. This perception is there among the citizens of India, and it's a very sorry state of affairs. However, about this bill, I must say that the bill carries the potential to systematically alter India's social fabric itself, sir. If passed, the bill will render ordinary the otherwise extraordinary position of systemic exclusion. It will allow the government to stand aside and watch as the children and their parents die for lack of health care and protection. Sir, the proposed bill states that people with more than 2 children will receive fewer government benefits or services. This includes money, this includes limited benefits under the public distribution system, even for those at the bottom of the lowest
strata, socio-economic strata of Indian society, sir. The bill privileges access to public education, healthcare facilities, and insurance to family with fewer than 2 children. In effect, the proposed text offers to perpetuate a long-standing anxiety around India's population growth, but takes on a particularly dangerous turn by attaching reproductive lives and children to direct exclusion from the polity. And this is certainly very dangerous, sir. Sir, as my colleague Mr. Hanumantaya was just saying, that yes, everywhere in the world, population or the total birth rate is reducing. And as per data until August 2019, India had no contemporary population explosion, sir. Instead, the trend has been in the opposite direction. Indian women had a total fertility rate of almost 6 in 1960, and the number has fallen to 2.2 by 2019. Sir, according to the 2018-19, the Economic Survey, Chapter 7, India's population grew 1.3% a year from 2011 to 2016, down from 2.5% a year from 1971 to 1981. The TFR was 2.2 in 2017, close to the replacement level fertility 2.1, sir. The survey estimated the TFR in 2021 to be 1.8. So it's a happy situation. It's not a worrisome situation, sir. And considering a demographic shift already occurred and is intensifying, the bill will only further marginalize the already marginalized, sir. For example, the idea of a population explosion, as many of my colleagues have expressed, lends credence to the country's already surging anti-Muslim sentiment. This, in turn, has been erected on false concerns that the population of Muslims in India is quickly outpacing that of Hindus. I think this is a lot of prachar made like this. This is fanned by communal statements by many prominent leaders, especially in election meetings, sir. However, the total fertility rate of Muslims is falling rapidly, as already stated about Kashmir, faster than it is among the Hindus. So this perception has to be created. This said, sir, the biggest victims of the bill will be Indian women in general of this generation, irrespective of any community, because many women already can't refuse to marriage, to reproduce, and are forced to undergo non-voluntary birth control measures. They are not at all considered, irrespective of their health conditions or whatever. They have to undergo pregnancy because beta chahiye. So that is why the Beti Bachao movement. Clause 8 of the bill is extremely problematic, sir. It says that no maternity or paternity facilities will be given to those who have more than 2 children. Not giving maternity benefits is very bad. Sir, even paternity benefits must be given. In fact, I have introduced a bill in this very parliament that even paternity bill should be given, people should be entitled, fathers also should be entitled to be looking after their children at home, and we cannot allow the women to bear the brunt of decisions which they are not taking on their own. India has given us the freedom to make our own decisions. Unfortunately, our women cannot do that, and their pregnancies are forced upon them. So we cannot allow this to happen, sir. Female infanticide is also likely to worsen from the current skew of 909 female births per 1,000 male births. In effect, the bill will ensure the continued marginalization and erasure of women from public life, sir. We need, on the contrary, what we need is more expenditure on public health, and not bills that punish people for crimes they do not commit. We must safeguard women's rights
and contribute to a healthy population, sir. I agree with what my colleague Ami Yajnik just said, that, you cannot bring in things that you're punishing the entire population for your misgovernance, your own failure. Instead of population control bills, India should consider a population investment bill that takes the health, well-being and education of its citizens seriously. Sir, rather than forcing on the number of children, the bill should focus on the number of deliveries to cover twins, triplets, quadruplets, apart from normal deliveries. And as they have spoken about surrogacy and all that. Sir, I'll just conclude in 1 or 2 minutes. As per the National Family Health Survey of 2015-16, approximately 13 million women of reproductive age 15 to 49 in India who want to avoid pregnancy are not using modern contraceptive methods. This is referred to as having an unmet need for family planning. On an average, Indian women wish to have 1.8 children on an average. This is otherwise known as desired or wanted fertility. However, they end up having 2.2 children on an average, sir. The most urgent task of the family planning program is to address unmet needs in India by expanding the range and reach of contraceptives, and especially the choices that women should be making, especially to the marginalized communities. So we have to reach to them. We have to spend on them, and we have to maximize the reach of available contraceptives, prioritize quality care and family planning counseling. We have to invest in training of healthcare providers and frontline workers, and Asha Didis, for example. Please conclude. Yes, sir. Asha Didis are the core of a village, and they need training on explaining to women the contraceptives that they should be choosing. Government should invest adequately in social and behavioral change communication for addressing barriers related to socio-cultural norms, fears, misconceptions related to contraceptive measures, sir. And at the end, I'll say, prioritize family planning and reproductive health services in emergency situations at all levels of service delivery. This is more important than punishing people who for no fault of their own. Thank you, sir. Thank you. Shri Mahesh Poddar ji. Thank you, Chairman sir. सर, पीएम ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब तब विश्व के हर मंच पे भारत के युवा आज़ादी के बारे में गर्व से चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये तत्काल जो हमारा फ़ायदा है, केवल अपनी सोच को उस तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उनकी दृष्टि भारत के भविष्य तक है, आगे आने वाली पीढ़ियों तक है। और वो सोच रहे हैं कि यदि हम कुछ कदम नहीं उठाए, और उन्होंने इसको जोड़ा है आबादी को संसाधनों के साथ, तो एक समय आएगा जबकि आबादी और संसाधनों का अनुपात बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, और वो उस समय जब हम जागेंगे तो हम पाएंगे कि हमने बहुत देरी कर दी, हमने पीढ़ियों की देरी कर दी। और इसलिए उन्होंने लाल किले के प्राचीर से देश का आह्वान किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने साथी राकेश जी को कि उन्होंने उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज ये बिल लेके आए हैं। और महोदय, 40 बार, ये कोई नई समस्या नहीं है, और न पहली बार, न कोई ऐसी भी बात भी नहीं है कि पहली बार या कोई इस संसद के सत्र में ही ये बातें उठी है। जैसा बताया गया कि 40 बार से अधिक इसके बारे में प्रयास हुए हैं, इसके बारे में चर्चाएं हुई है। और 1992 में एमएल फोतेदार जी ने भी एक बिल लाया था जो राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने के करुणाकरन जी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी। महोदय,
इमरजेंसी के दौरान जो हुआ उसको मैं देखता हूं तो पर्सनली मैं उसकी भावना को गलत नहीं मानता हूं कि जनसंख्या में नियंत्रण तो सरकारों का दायित्व होना चाहिए, उसके लिए कदम उठा लिया। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति जिस तरीके से उसको लागू किया गया उससे सहमत नहीं हो सकता, और उसका परिणाम भी देश में देखा। और उसका परिणाम केवल उस सरकार ने नहीं देखा, उस समय के लोगों ने नहीं देखा महोदय, मैं तो ये कहूँगा उसका परिणाम आज भी हम देख रहे हैं। आज भी इस विषय पे चर्चा करने में लोग संकोच कर रहे हैं, आज भी हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी, विशेषकर कांग्रेस के साथी, बार बार इसको एक धर्म के साथ में जोड़ रहे हैं। आवश्यकता नहीं धर्म के साथ जोड़ने की, वो भी हमारे साथ भारतीय है। यदि संसाधन हमारे हैं तो जितना हमारा है उतना उनका है। हम ये नहीं कहते कि उनको प्रथम अधिकार है या पीछे का अधिकार है, हमारे बराबर का अधिकार है। हम किसी भी मायने में बराबर हैं, हर मायने में बराबर हैं। तो अगर कोई समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, तो जितनी बड़ी समस्या हमारी है उतनी ही बड़ी समस्या उनकी भी है। वो भी देश का भला चाहते हैं, वो भी देश के संसाधनों का उचित बंटवारा चाहते हैं। महोदय, मोदी जी का आह्वान है सबका साथ सबका विश्वास। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह समस्या ऐसी है जिसको किसी एक समाज के वर्ग को अलग करके इस समस्या से हम निजात नहीं पा सकते, या एक पॉजिटिव हम दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि इसको करने के लिए सबका साथ चाहिए और सबका विश्वास चाहिए। सबसे अधिक उनका विश्वास चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान में इसकी पीड़ा झेली थी। उनका विश्वास कैसे आएगा, ये मैं समझता हूं किसी कानून के द्वारा नहीं आएगा, किसी जबरदस्ती के द्वारा नहीं आएगा। एक आम सहमति की भावना जब बनेगी देश में, और एक देश उन्नति के लिए सब एकजुट होंगे, एक मत होंगे, तब ये बातें आगे बढ़ेगी। महोदय, आज एक कल माननीय केशव राज जी झारखंड से संबंधित हैं, कल इन्होंने एक बात कही, और ये बात कई प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत चर्चा का आ गई है। दक्षिण के हमारे राज्य और वेस्टर्न राज्य ये जॉब ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, और झारखंड जैसे हमारे पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य है वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जॉब कम पैदा कर रहे हैं। रिजल्ट ये है महोदय कि आज के दिन में मैं रांची में रहता हूं और बेंगलोर में भी रहता हूं, मेरे पास में अनेक केस ऐसे आते हैं कि लड़के लड़की शादी हो गई है और वर्षों तक लड़का बेंगलोर में जॉब कर रहा है, लड़की अकेले रांची में रह रही है, और उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि दोनों साथ रह सके। या लड़की, कई बार ऐसा होता है लड़की को वहां जॉब मिल गया, लड़का यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है, वो साथ में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। महोदय, यदि हम ये अपेक्षा करें, और वो अपेक्षा करते हैं कि हम कर ज्यादा देते हैं तो हमें राज्यों का मतलब उसका शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। मैं उनकी बात गलत नहीं कहता हूं, लेकिन मेरी बात भी गलत नहीं है यदि मैं अपेक्षा करता हूं कि हम लोग ज्यादा हैं तो हमें भी ज्यादा मिलना चाहिए। हमारी चिंता कौन करेगा? महोदय, ये एक छोटा सा उदाहरण है आबादी के एक कंट्रोल से बाहर जाने का, और उसके अनुरूप मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सरकार ने ये किया या वो सरकार ने वो किया, ये भी मैं नहीं कहता हूं। सारी सरकारों ने प्रयास किया कि देश में तरक्की हो, लेकिन तरक्की की रफ्तार यदि अपेक्षाओं की रफ्तार से पीछे छूट जाएगी तो असंतुलन होगा ही। और जो असंतुलन में राज्यों के बीच में देख रहा हूं महोदय, जमीन, जंगल, ये सारी चीजों की अपनी सीमाएं हैं, इन्हें हम कुछ पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इसके बंटवारे के और हक और इसका उपयोग कौन कितना कर सकता है, ये एक चिंता का विषय है और एक हमें सोचना पड़ेगा। महोदय, अब हमारे साधन अगर कम हैं तो हमारा कसूर नहीं है। साधन बढ़ा नहीं सकते, प्रकृति को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ, प्रकृति ने एक हमें ईश्वरीय देन है आबादी, जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो बहुत अच्छा नाम रखा है इन्होंने, पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल। पॉपुलेशन बंद करने के लिए, नसबंदी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये इसको रेगुलेट करने की बात कही गई है। और जो रेगुलेट करने का मतलब होता है कि एक समझ बूझ करके इसको एक नियंत्रण में रखे। हमारे कांग्रेस के साथियों ने कहा और बार बार कहा मोटिव ऑफ द बिल, और कहीं ना कहीं पता नहीं हर चीज में इनको परिवार नजर आ जाता है। राकेश सिन्हा जी परिवार के साथ हो सकते हैं,
और परिवार के सदस्य हो सकते हैं। यदि उनका जिस परिवार से अर्थ है, तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष में जितने लोग बैठे हैं वो सब गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम उस परिवार के सदस्य हैं। लेकिन परिवार का अर्थ ये नहीं है कि हम देश को बनाना नहीं चाहते, बल्कि हम बार बार रिपीटेडली हर प्लेटफॉर्म पे खुलेआम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए हम चिंता करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए हम जीते, राष्ट्र के लिए हम मरना चाहते हैं। ये बातें हम कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि जिस पीढ़ी ने आज़ादी के बाद में जन्म लिया वो तो आज़ादी के लिए नहीं मर पाए, लेकिन जिस पीढ़ी ने आज़ादी के बाद जन्म लिया वो आज़ादी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद देश को आगे ले जाने के लिए, देश के भविष्य के लिए इस पीढ़ी पे दायित्व है कि ये आगे की सोचे और आगे की बात करे। महोदय, चाइना के बारे में बात किया गया। चाइना में बात सही है कि आज वहाँ पे पॉपुलेशन का उल्टा समस्या हो गया है कि चाइना की सरकार दुखी है, लेकिन इसके पीछे देखें आप, कितने वर्षों तक, करीब करीब 40-50 वर्षों तक उन्होंने वन फैमिली वन चिल्ड्रन पॉलिसी लगा के रखी। और उसके बाद में आज के दिन में जब उनके साधन बढ़ रहे हैं और जब चाइना आर्थिक रूप से इतना तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या की समस्या उनके आड़े नहीं आ रही है। आज अब उनको महसूस हो रहा है वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या कुछ और अधिक होती तो हम और अधिक तेजी से बढ़ते, और वो दूसरे लोगों को बसाने के लिए भी तैयार नहीं है। हम अपने देश की ओर देखें, हमारे पास में इतने लोग हैं और हम बड़े गर्व से करते हैं कि इतने लाख, इतने करोड़ लोग हमारे दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। यदि सूरीनाम में, मॉरिशस में बिहार का मटिया मजदूर गया था तो कोई चॉइस से नहीं गया था, उसकी मजबूरी थी इसलिए गया था। आज झारखंड का मजदूर जाकर के अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 और 18,000 फीट पे काम करता है तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपने घर में काम नहीं मिलता। महोदय, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब जनसंख्या इतनी हो जाए और रोजगार कम हो जाए तो उसके पास में विकल्प नहीं होता। महोदय, जब हम इस बिल में हमने एक चीज़ बात कही है, इसको यदि मैं ये कहूँ कि इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जिसकी आबादी ज़्यादा और जिसके बच्चे अधिक हो उसको ये सजा दो, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि जिनके बच्चे कम हो उनको कुछ इंसेंटिव दो, उनको कुछ ऐसा फायदा दो जिससे कि और लोग भी प्रेरित हो सके। हम ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ आज के आंकड़े बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। एक्सप्लोजन का अर्थ ये होता है जहां विनाश हो। ये सही है कि हम विनाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, और यदि हमारे साथी ये बोलते हैं कि उनको स्कूल दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको ये दीजिए, और यदि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो उस वृद्धि जो 2.8 या 2.2 या जो भी हो, उस वृद्धि के बारे में भी चिंता हमें करनी पड़ेगी, और ये तत्कालीन नहीं हो सकता। इसको लेकर के एक पीढ़ी, दो पीढ़ी। माननीय महेश जी, 2 वक्ता और हैं आपके दल से, और कुल उनके पास 9 मिनट बचे हैं 2 वक्ताओं के लिए, तो आप जी 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 महोदय। जब हम मानते हैं कि यदि हमारे साथी मानते हैं कि जनसंख्या एक समस्या है, तो मैं समझता हूं इस बहस को विरोध ना करें, बल्कि इसको मजबूत करें, अपने सुझावों के द्वारा मजबूत करें। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबिलिटी कैसे हो सकती है उसके बारे में कुछ सुझाव दें। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो भड़काने वाली बातें हैं कि इस धर्म से और उस धर्म से, ऐसी बातें ना करें। मैं समझता हूं हमारे हर धर्म में, हर जगह उनके जो नेता हैं उनमें कुछ बुद्धि है, और वो अगर हमें उनसे सही तरीके से बातें पहुंचाएंगे तो उसको एक सकारात्मक रुख से वो देखेंगे। और ये बिल जो है, इट इज़ टू रिविटलाइज द एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोमोटिंग द स्मॉल फैमिली नॉर्म अप टू 2 चिल्ड्रन पर एलिजिबल कपल। और मैं राकेश जी का धन्यवाद दूंगा, और मैं गर्व कर रहा हूं आज कि विश्व के अनेक देशों के खराब आंकड़ों के बाद भी इस देश में भारतीयता का एक उदाहरण, जो हमारी संस्कृति है, अनवेड मदर्स की संख्या हमारे यहाँ नगण्य है, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिल रहा है।
1% भी नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब हम इतने गर्वान्वित हो सकते हैं इस उपलब्धि पे जो हमारी माताओं बहनों ने किया है, अपने आप को संयम में रखा है, परिवारों ने और युवक युवतियों ने अपने आप को संयम में रखा है, अपने भविष्य की जिम्मेवारी समझिए, बच्चे के भविष्य की जिम्मेवारी बनती है, तो ये जिम्मेवारी का एहसास उन लोगों को भी होना चाहिए जो बच्चे तो पैदा करते हैं किसी भी कारण से जाने अनजाने में, लेकिन उनको अच्छा भविष्य नहीं दे पाते हैं। ये भी एक हमारी जानकारी होनी चाहिए और एक प्रयास होना चाहिए। महोदय, इस बिल में कहा गया है टू इंश्योर हेल्दी बर्थ स्पेसिंग। हेल्दी बर्थ स्पेसिंग महोदय, हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने, जब हम 60-70 के जो लोग हैं, हम लोगों ने देखा है और हर परिवार में हुआ है ये कि बच्चे किस परिस्थितियों में पैदा हुए और चाइल्ड बर्थ का और चाइल्ड मोर्टेलिटी का क्या रेट था। हर परिवार में दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन अब जो जागरूक लोग हो गए हैं तो बर्थ के बीच में थोड़ा एक स्पेस भी बना है, उनके केयर की भी चिंता हुई है और ऑब्जेक्टिव में बताया गया है टू अचीव द फुलेस्ट डेवलपमेंटल पोटेंशियल एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विथ देयरविथ एंड इंसिडेंटल देयर टू। महोदय, ये एक बहुत नेक प्रयास है और नेक नियत के साथ में है और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ राकेश जी के लिए नहीं, हम सब के लिए, इस सदन के हर सदस्य के लिए आवश्यक है कि हम इसको एक नेक नज़र से देखें, एक नेक इरादे से देखें, इसमें राजनीति और कोई उद्देश्य ढूंढने की कोशिश ना करें। महोदय, जब मैं देखता हूं कि इसमें कुछ पॉजिटिव उदाहरण हैं, फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु अडॉप्ट्स स्मॉल फैमिली नॉर्म, इस तरह की पॉजिटिव बातें कही गई है। हाँ, कुछ संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है और मैं समझता हूँ ये सदन इसीलिए बना है कि यहाँ पे बहस करके सारे लोगों के विचार को समाहित करके हम एक निर्णय पे पहुँचे। एक पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक। हाँ, थोड़ा बहुत दंडित या डिसइंसेंटिव का भी प्रोग्राम होना चाहिए, जिसका भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। महोदय, कुल मिलाकर के तो मैं ये समझूंगा कि जहाँ तक इस बिल की चर्चा देश में होगी और होनी भी चाहिए, और मैं समझता हूं कि सारे लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को किसी चश्मे से नहीं देख करके, राजनीति से ऊपर उठ करके देश के हित में इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और अंत में मैं इतना जरूर कहूँगा कि यदि ये कुछ निर्णय होता है और उसके बाद में निर्णय होता है और एक कदम भी हम आगे बढ़ते हैं तो यह एक लंबी यात्रा की दिशा में पहला कदम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महेश जी। श्री अमर पटनायक जी, माननीय अमर पटनायक जी। अच्छा एकदम। Sir, in 2018, a petition came up before this Honorable Supreme Court by an Orissa resident. The candidate had filed his nomination to contest panchayat polls, but had been debarred. His application was rejected because he had 3 children. The rule is currently that with more than 2 children, he cannot run for posts in local government. This was pursuant to the 73rd Amendment of the Constitution, 1992. There is another law in the Cooperative Societies Act, at that time the court observed, in Sion, which required that members could only have 2 children. So there have been laws like this at several places in patches to achieve the purpose of the sense of responsibility that the honorable member has introduced through this bill, that an over-explosion of population would render the resources insufficient to serve them, to serve those same very people, and also
make the progress of the country as a whole for the rest of the people who are not producing also insufficient. Facing this, using this logic, one would have probably thought that the best way to achieve control of population is through legislative measures, through coercive measures. But history, not just in this country, but the world over, including in the United States, is witness to the fact that strong abortion population control laws have not worked. I will come to the data relating to the current situation in India, but I am going on the conceptual space. So the first population conference of the United Nations was held in 1974. Karan Singh, India's health minister at that time, declared that development is the best contraceptive. I still feel that this particular logic holds good, that development is the best population control measure. But the question is, which people would say, that how do you achieve development when the population is growing? That is also a logic. Now we have seen that the biggest destruction to our environment, to our resources, natural resources, and it has been proved by economists, has not come from the number of the population. It has come from their behavioral pattern. We have to change that. It has come from industries. These industries, we are not closing industries. We are telling them, change your behavior, put in environmental control measures. Similarly here, the method has to be at the cognitive level, at the cultural level. It will be slow. We have achieved population replacement level of 2.1 in most of the southern states, including Orissa. Was there any control measure? Was there any regulation? It was only through development progress. So I would again be reminded of what Mahatma Gandhi said relating to the use of natural resources. The problem is not of human need. The problem is of human greed. So even if you have a small number of population, your greed can destroy the environment. Greed can destroy the resources. So I would again come to the fact that in the Finance Commission, in the 15th Finance Commission, like the 14th Finance Commission and the earlier commissions, population size criteria was taken as a criteria because the resources have to reach them. The argument and the criticism for this came from the southern states, including Orissa, that if you take 2011 census and not the 1971 census, then the states who have actually controlled the population through development are going to get less resources. My point is, if we have to consider that population control will come and should not be a criteria for deciding resource allocation, but people should understand its reducing impact if they grow more or if they produce more, then its criteria, its importance should not have been there at all. But the very fact, please conclude. Yes, sir. The very fact that we are recognizing that resources needs to go to population, higher population, to those states which are having more population,
is an indirect admission of the fact that unless development reaches them, like what honorable members, other members have also said in health, education, and various other aspects, they cannot reach, we cannot achieve what we desire. The intent is definitely not disputable, but the problem is, it is not through any kind of legislation. I will end, sir, by saying two things. Data suggests that the maximum number of children are being produced by the poor. They may belong to any religion. And that is purely for economic reasons. But the good thing about the current situation is when Niti Aayog says that the country's birth rate calculated as the number of annual births per 1,000 fell from 25.8 in 2000 to 20.4 in 2016. I would ascribe it to this development, to this growth. It is not by putting in any measures. There is also a misunderstanding that if you have a replacement level of 2.1, population will not grow. It is wrong. Population would still grow, but the Malthusian theory will not apply where it grows in geometric proportions than what you can actually provide for. There is also there is also a thought that these kind of measures are talked about by the rich on the poor. Let us get out of that kind of a debate. Thank you. I would, so last one second, sir. I would just quote. You have already taken more double time. Please conclude. So I'll finish it. Others have to speak. I generally don't do, sir. So I'll finish. Adrian German, he was formerly of the Ford Foundation and a celebrity in international women's health and leads a coalition. She has said that there cannot be a top-down solution. The solution has to come from our women and from our men too. Thank you. And it has to be through Dr. cultural methods and not coercive methods. Thank you so much. Thank you. Sir, here my request is, here the proposed bill is the population regulation bill. Instead of bill, sir, here we should discuss the pathetic living standard of the majority of Indian child and how we can prevent the child death in our country. This is the major issue. Sir, in some of the region in our country, infant death is more than 200 in every 1,000 childbirth. Healthy and wealthy, educated citizens are the strength of our nation. But here, what we are seeing, sir, the education expenditure is our country. The expenditure is below 3% of GDP. Sir, the last year amount for education department is only 0.24%. Now the proposed amount is 0.22% for education department. Sir, the same kind of experience we are seeing in health sector also. Our respected health minister is here. The allotted amount of the last year for the health department is only 0.37% of GDP. Now in the government proposed amount, it is reduced to 0.17%. Sir, then the children in our nation, how the children in our nation will get proper health and education facilities? Sir, you please look the child care institutions like Anganwadis in our nation. Huge number of our Anganwadis are working in rental buildings. Sir, another group of Anganwadis are working without proper Paka buildings. So then they are working without proper space and buildings. So more than 90% Anganwadis are working in small buildings with 300 or 400 square feet. So government should change this kind of situation. Government should make the child care institutions as a garden of knowledge and enjoyment for the children. These words I am concluding. Thank you, sir. Thank you.
प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे कई वक्ताओं ने शुरू से ही राकेश भाई ने जब ये बिल लाया तो मोटिव की बड़ी बात की। अब राकेश भाई के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पे ऊपर लागू होता है कि ज़ाहिर मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है, मैं दिल में इरादा करता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। शुक्रिया सर। एक और चीज का जिक्र किया, सेफ्रॉन डेमोक्रेसी, हम में से किसी ने नहीं बोला। आज अगर पूरे सदन डेमोग्राफी आज अगर पूरे सदन में कोई कहीं सेफ्रॉन है सर तो उन्हीं की बंडी में और कहीं नहीं है। तीसरी चीज सर, अभी अमर भाई ने एक बात कही सर, 8वीं में बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक में हम लोग को इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस होता था, 8th या 9th में, क्यों नित्यानंद जी? 9th में हम लोग के समय में इकोनॉमिक्स का पेपर आता था। नहीं सर, उस समय आपका भाव बहुत संभाव वाला था। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर कि उसमें जनगणना का एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन पे एक अध्याय होता था, और जो बात अभी अमर जी ने कही उसमें एक लाइन था, बाकी चीजें हिंदी में थी, लेकिन उस लाइन को अंग्रेजी में लिखा गया था कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और अगर आप टीएफआर की स्थिति देखें अलग अलग राज्यों में तो आपको लगेगा कि ये मायने रखता है। माननीय उपसभापति महोदय, कई दफा इस तरह के बिल्स के साथ जो आशंका होती है ना, वो डॉग विसिल पॉलिटिक्स वाली होती है। और मैं जानता हूं राकेश भाई डॉग विसिल पॉलिटिक्स में बहुत पीछे हैं, ऊपर वाला ना करे कभी सक्सेसफुल हो, वो राजनीति उस राजनीति का लंबा आयाम नहीं होता। सो इन December 2020, in an affidavit filed in the Supreme Court, a petition seeking implementation of two-child norm, what the government of India stated, I wish to read. I quote, Government of India affidavit. International experience shows that any coercion, this bill is by nature coercive, any coercion to have a certain number of children is counterproductive and leads to demographic distortions. मैं नहीं कह रहा हूं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यही सरकार कह रही है, 2020 में कह रही है। राकेश भाई, through you sir, honorable deputy chairman sir, most states have already reached a replacement total fertility rate, TFR. All my colleagues have spoken about it. Others are rapidly reaching that. So I think any coercive mechanism. तीसरी चीज है कि डेमोग्राफी को अगर आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है माननीय सभापति महोदय, बीते कुछ वर्षों में एक अद्भुत चीज हमारे सार्वजनिक जीवन में हुई है। पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। इतिहास लेखन का काम इतिहासकारों का होता था, आजकल पॉलिटिशियंस ने वो काम भी ले लिया है, ना लिख पाए तो बदल डालें। और उसी तरह से पॉलिटिशियंस डेमोग्राफी का भी काम ले रहे हैं। अरे डेमोग्राफी इज ए वेरी सीरियस बिजनेस, इट शुड बी लेफ्ट टू डेमोग्राफर्स। And we have no dearth of great demographers in this country who have contributed immensely and who have provided an insight, a direction that through which our family. एक चीज और होती है, इससे पहले जब पॉपुलेशन कंट्रोल का एक और निजाम को ये ख्याल आया था सर, जब बहुमत बड़ा होता है ना तो इंसान के अंदर कई सपने आते हैं। तो एक वक्त 75 में उधर आया था और अब इधर आ रहा है, लेकिन ये सपने डरावने सपने में तब्दील हो जाते हैं। मगर कभी भी किसी निजाम को ये तय करना चाहिए कि दायरा लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन का कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। सर, अभी जो तत्कालीन आबादी के हिसाब से देखें, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं 79.8% हिंदूज, 14.2% मुस्लिम्स, 2.3% क्रिश्चियंस एंड 1.7% सिख्स एंड रेस्ट अदर्स। हमें तो यह भी जानना जरूरी है कि हिंदुओं के अंदर इस आबादी में, जब आज मैं यहां बोल रहा हूं राकेश भाई, तो सैनिटेशन में एक डेथ हो चुकी होगी सीवर में उतर करके, उसकी भी जाति है, वो भी हिंदू है। हमारे तौर तरीकों में, हमारी प्राथमिकताओं में ये चीजें क्यों नहीं आती हैं माननीय उपसभापति महोदय? बस मैं एक दो और चीज करके, और खास करके जो हमारे पेट्रियार्कल समाज का जो एक स्ट्रक्चर जो हमारा है,
इसमें सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या की संभावना और बढ़ेगी। आप रोक नहीं पाएंगे। आपके कानून के हिसाब से बोर्ड लगा दिया जाता है नर्सिंग होम में कि यहां भ्रूण जांच नहीं होती है, सबसे ज्यादा जांच वहीं होती है। हमें पता है ना कि हम जब कानून बनाते हैं तो उसमें लूप होल्स कौन लोग ढूंढते हैं। ये सनद रहे सर, और कोई ऐसा कानून तो कतई ना हो जो विमेन को फर्दर विक्टिमाइज करे। इसमें सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन की संभावना विमेन की है सर। सर ये असल में राकेश भाई का दोष नहीं है, ये नियो माल्थसियन आर्ग्यूमेंट भी है। ये जो रिसोर्स का और पॉपुलेशन का एक बाइनरी टाइप रिश्ता बनाते हैं, ऐसा है नहीं, बड़ा संश्लिष्ट चरित्र है, उसको समझना जरूरी है। जो मैंने पहले एक बात कही थी, आप उन राज्यों की सूची देखें, टीएफआर उनका लेवल देखें, वो कैसे संभव हुआ। डेवलपमेंट इनपुट गया है। अभी महेश भाई बता रहे थे, झारखंड का आदमी, बिहार के लोग तो कई बार लोग हंसी में कहते हैं सर कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गए थे ना तो वहां उनको चाय पिलाई थी बिहार वाले ने, पहले से था वहां खोमचा लगा करके। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी स्थिति ये क्यों है, झारखंड की स्थिति क्यों है। मैं केरल तमिलनाडु के आपत्ति से भी वाकिफ हूं, लेकिन सर ये एक दिन में नहीं हुआ है। 70 वर्षों में हर सरकार ने वहीं इन्वेस्ट किया जहां पहले हरियाली थी, वहां इन्वेस्ट नहीं किया जहां हरियाली होनी चाहिए थी। तो वो नीतियां बदलिए, ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। अब सर एक मैं डेटा देना चाहता हूं। आई रिपीट, द कंट्रीज हेल्थ केयर बजट सॉ अ 10% डिक्लाइन फ्रॉम रिवाइज्ड एस्टिमेट of 2021. There was a 6% cut in allocation for education, while the budgetary allocation for social security schemes declined from 1.5% to 0.6%. और तब हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं कर रहा है। आखिरी चीज सर, we must realize that women would bear the brunt of a two-family norm. The use of condoms declined by 52%. And vasectomies fell by 73%, showing the reluctance among men to engage with birth control. एक 30 सेकंड की टिप्पणी करके सर, वेस्ट बंगाल का लेसन मैं देना चाहता था। Interestingly, lessons could be learned from West Bengal. In West Bengal, the figures for women with 10 or more years of schooling, 32.9%, and women marrying before age 18 years, 41.6%, are almost similar to Bihar and even worse than Uttar Pradesh. But it seems that the West Bengal reached the TFR of 1.6%. Why? Because of decline in neonatal death. अब मैं समझता हूं सर इन तरह की चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। और आखिरी टिप्पणी करूंगा, मैं शुभकामनाएं देता हूं सर मूवर ऑफ द बिल को, लेकिन इस तरह के मसलों पर एक समेकित राय हो। इस देश की प्राथमिकताओं की लिस्ट में ये बहुत पीछे आता है। राकेश जी, फिर किसी को बड़ा बहुमत आएगा और इसी तरह की लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ने की कोशिश होगी। लो हैंगिंग फ्रूट जहरीले होते हैं सर। जय हिंद सर। धन्यवाद। माननीय विनय विश्वम जी। माननीय विनय विश्वम जी। Yes sir, I'm here. Sir, taking into account the time factor, I keep apart these figures of the TFR and the affidavit of the government on such matters. Sir, my friend Rakesh is a good friend of mine, but I never thought that he is so cruel to the people. So cruel to the people. Yes, your friends did. Wearing a saffron coat, he came to this house and delivering a reason why this country is poor. This country is still a country with greatness, but with poor people. A rich country with poor people. We know everything. The global hunger index, we start 101 position. The death of anemic women, we are number 1. The death of children below 5, we are number 1. So many number 1 we are having. It's a common concern. We communists are concerned. You are concerned. The Congress is concerned. No doubt. What is the reason? The reason is the poverty of this country. It is known to everybody. But my friend has found the reason. The people are the enemies.
So what to do? Punish them. See that they are not even born. This is the approach of this bill. So look at the section 7 of the bill. It's a punitive measures, one after another coming. One after another. No time to read all those things. No ration even. No jobs, no increment, no subsidies. Manya Vinay Vishramji, you can continue your speech when this discussion resumes. We have some special mentions. Then at 3 we have to. So you can continue when we next meet on this subject. Thank you, sir. Thank you. Now this is special mentions. Ms. Dola Sen. Just you have to read the title only. Sri Sushil Kumar Modi ji, Dola Sen ji absent. Sri Sushil Kumar Modi ji, absent. Sri Rajmani Patel ji, हाँ सिर्फ आप टाइटल पढ़ दें. टाइटल पढ़ दो. डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ विंध्य प्रदेश. ले कर दीजिए. माननीय सभापति 2 मिनट का है. नो अब खत्म होगा 3 बजे हमको. माननीय सभापति जी, पृथक विंध्य प्रदेश को बनाने के बाबत मैं ये सदन पर रखता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. माननीय श्री केसी राममूर्ति जी, नॉट प्रेजेंट. श्री वी विजय साई रेड्डी जी, नॉट प्रेजेंट. श्री एलामरम करीम जी, प्लीज read the title. Transports free of cost of the Shaheen tropical cyclone victims in Muscat. Thank you. Dr. Fauzia Khan ji, just read the title. Time is already there. सर, मी मराठवाडा विभागामध्ये रेल्वेच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यासंबंधी विशेष उल्लेख सदनाच्या पटलावर ठेवते. Thank you, Dr. The House stands adjourned to meet at 10 hours on Monday, the 7th February 2022.